First of all, thank you very much for coming to Bombay and to Somaya Vidya Vihar. I have two questions for you, Your Holiness. One is that I know you travel all over the world meeting people and giving teachings. But when you're not teaching or traveling, what is a typical day in the life of the Dalai Lama like? Please tell us about your routine day. And the second question is, I've been reading that the Nalanda University is being revived. So can you tell us about your involvement in the revival of the Nalanda University at Rajgir? Okay. Thank you. 가서 당구 등한데 파수 뭐시면 그걸 같이 갔어. Then firstly, as a Buddhist monk, my daily life you see carry according the Vinaya rule, according Mula Savasiddhivatan Vinaya or Patimoksha, the precepts, 253 precepts. So we keep these precepts as a monk. Then perhaps as a student of Nalanda masters, whenever I have time, I always read, study, particularly Nagarjuna and Chandrakirti and Shantadeva. Mainly, these three, their text. I always read, think, and almost a daily basis meditate. Then, also as a practitioner of Tantrayana, Tantrayana, also some meditation. As a student of Madhyamika philosophy, analytical meditation. Then, as a student of the Shantadeva, is meditate on altruism. So these are my main practice. So each day, I got up 3 in the morning, then meditate about 5 hours, like that. So then usually from 3 up to 8:30, and then meeting with people. Then open my mouth, blah, 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 that way. And about 6:37, sleep. That's one important meditation. Very sound sleep. No sleeping pill, no tranquilizer, completely relaxed like that. So I think these practice altruism and sort of understanding about emptiness, immense benefit to bring inner peace. So I carry that kind of life. Now I think nearly 79. I feel, although refugee, but my life, carry quite useful. So I don't know, another 15 years or 20 years, I don't know. I will carry it that way. Then second part, Kaza. Yes. When 1956, when I came to India, the government of China, People's Republic of China, is give some fund or donation. Actually, the check I carry on behalf of Chuanle and one function at the Nalanda, Pandit Nehru there. Chuanle, all the some illness or something. So he asked me, on behalf of him,
I should carry the check with Chinese ambassador, Delhi. So at that time, Hindi chini bye-bye. I also, you see, as a sort of high sort of position, Chinese sort of People's Congress. I was the deputy chairman of steering committee, steering committee of the People's Congress, like that. So then, after 59, although you see that project carry, but not very sort of, I say, rigorously. Then one time, the former president, Abdul Kalam, I really sort of respect him, admire him. Poor, come from poor family, Muslim background, eventually become great scientist, then become Indian president. Oh, wonderful, wonderful, very humble. And also she's showing genuine interest about the altruism, or Shantadeva's book. Yeah. So one time, you see, he connected that project, Nalanda project. But then, in that project, some politics there. So eventually, Abdul Kalam, I was told, resign from that responsibility. So I have no direct contact like that. I don't think any necessary translation. I think, okay. Now, next question. Your Holiness, I once had a dream in which I asked you a question, but when I woke up, I couldn't remember the dream very well. So I'm very fortunate to be able to be here to ask you in person. The question is, what is the essence of taking refuge? Karsa. The essence of taking refuge. Nilam jilam asang. Essence. What is your question? What is the most important thing about in taking refuge, when you take refuge to the Buddha? That's, of course, all major religious tradition. Some kind of refuge somewhere, refuge. All tradition have. For example, Christians is a single-pointed faith towards God. Muslims, single pointed faith towards Allah. So likewise, so all major traditions, you see, the single-pointed sort of faith towards one's own, or say, a God or teachers, like that. And then Buddhism, real sort of protector or refuge is Dharma, not Buddha. Buddha simply teach us Dharma. Dharma is the real protector or real refuge. So that means Dharma not outside, but within ourselves. Wisdom, warm-heartedness, these two things are eventually reach certain level and then become Dharma. So once you see the real Dharma develop within ourselves, then you, kasota, you then saved from certain level of sort of kasota, samsaric sort of what's the levels like that. And then Sangha, you see, kasota, community. See, like I think one student, the first class, there's no sense of competition, positive competition with 10th class
or 12th or 15th class, same classmate, then there is a sense of sort of more competition, positive way. So competition, there are two kinds. Destructive competition or negative competition is in order to you become top, create some problem other. That's destructive competition. That's bad. The positive competition, sense of competition is, so you want to be top, like other. And even, you see, your classmate helping them reach top. That sense of sort of competition is positive. So you see, take refuge to Sangha that way. You see, those individuals who already reach in certain deeper experiences, then they make to kasore. Ka. Look towards them. Ka. Take their example. This is correct. Correct. That's him. Kasa. Take their example. Ka. Take their Oh, example. take their example, yes. Like that. So thank you, my teacher now. So that's Buddhist way. Buddham Shanam Gacchami, Dhammam Shanam Gacchami, Sangham Shanam Gacchami. Main refuge is Dharma, not Buddha, not Sangha. I think yesterday also I mentioned Buddha like doctor. Dharma is like medicine. Real sort of curing your illness is not doctor, but medicine. So Dharma is like medicine. Sangha like nurses. With their help, you can cure illness more sooner, more quickly, like that. Like that. Next question. Namaskar, Your Holiness. The question is, when we talk about the Mahayana and the Lotus Sutra, in Lotus Sutra, we know that it talks about the last sessions which Buddha gave to the disciples. It talks about the way of life to be lived and how it's to be done. So how do we make it current in our lives today? Because as you said, as per the region and the people, it has been taught to us. So how would you enlighten for us to be go ahead for our generation? Karsa. Summarize is in Lotus Sutra, how we make it current for our generation today and take it ahead for us. What the other? Tamju pegar nala, chita chue nyamle che mangu sung jas. Ta sung ba di tingsa tu jo de jarni, ni nyamle che khande che buinas. Sorry, I haven't go through so thoroughly about that sutra, so I don't know. So I should learn from you. My knowledge is very limited. But some sutra, you see, merely mention about Sukhavati, some heaven, and some Chinese tradition, and also Japanese tradition. You see, reading these texts or these sort of the sacred books, some of them, you see, believe just reading these books, some sort of prayer, you see, helpful to reach that sort of realm. That I doubt. Just reading and some prayer, then no need dharma. Like you see, take refuge, doctor, without taking medicine, how can cure? Karma has to be there. Oh. Karma has to be there. Oh. So I think it is better to read more books
do not rely one book. That's better. That's why you see the Buddha's own word, which translated into Tibetan about 100 volumes, different sutras. Then more important, the commentary wrote by like Nagarjuna or so on, these are great masters, about 200 volumes. So we have to read, study. Then you get the fuller picture like that. Okay, Yes. that's our way, including myself also, that is the way. Read more books, and particularly useful, read book which say certain point contradiction. It's very, very helpful to get deeper meaning. One book state or hold some views, then another master, you see, debate about that, criticize that. Then you see you get the opportunity to further analyze what is this sort of master's, what is behind of this master's view, and the sort of critical view, another sort of master. So what is their sort of thinking, their reasons? That immense help to get deeper understanding. Like that. So like this morning I mentioned Buddha Palita and Bhavabhiga, serious discussion, rejections. And then the Chandrakirtis, you see, series of discussion and refute some of the Baba Vega sort of argument. So very, very helpful to get deeper understanding. You just read one book, then fantastic, fantastic, fantastic. It's not a proper way of Nalanda tradition. Thank you. Your Holiness, today you are our master, so we want a direct answer. Can you hear me? Okay. I said today you are our master, so we'd like a direct answer. My question is, we talk about karma and good and bad, but the definition of good and bad changes from time to time and from culture to culture. So how can that be a reality of distinguishing between good and bad karma? Especially if what is very attractive about Buddhism is the concept of shunyata. So if you have shunyata, then where is the question of rebirth and different goals? Karsa. Lede hiyo mukabla yaga da duga seji sungu yorobas. Oro. Da gewa da migewa. Da yaga da duga seji rishung da mita da netang da mita da so so tatang kha yorobas. Right. 이 컨데스 야가 두가서 컨데직을 세샤고 요나스 엔다 하나 신게 동번이 거지 해용도 에네야 두서 히단 두서 매워서로 직 차용 거스 틴데히 Yes, the first part, the theory of karma and good or bad, or sin, or because of the virtues. Yes, due to different philosophical views, you see, the definition of these things, there are differences. But from the Buddhist viewpoint, and particularly Madhyamika philosophical viewpoint, then good and bad is relative. Entirely depend on the circumstances. The ultimate sort of demarcation is something which benefit to oneself or others. That's a positive. Any verbal action, physical action, or mental action, something harmful to other, eventually harmful to oneself. You see, that considered negative, no absolute. So, and I think yesterday also I mentioned it, under different circumstances, same action, under certain circumstances, the Buddha's even Vinaya mentioned certain point at the beginning, he allowed. Then later, he rejected.
he prohibited. Similarly, initially, sort of he allowed, he rejected. But later, he gives some exception. Under such circumstances, it's okay, like that. What is the connection with shunyata then? The shunyata, you should now, yes, among these 17 great masters, you see, many of them criticize Nagarjuna's sort of view or shunyata. They consider, according to Madhyamika's understanding about shunyata, is nihilism. If you have sort of very because of the serious interest, then you should read Nagarjuna's the Madhyamika Mulakarika, particularly the 24th chapter. There, he mentioned all the objections come from Chitta Mantra and some other sort of school of thought. Then he answered. So the essential sort of answer is shunyata, not nothingness. Shunyata means absence of independent existence. It never denies existence. Existence is there. lecture singibe suk tongbo tongbo ni su su sa chigla सुन हाँ ये जैसे कि हृदय पाकृता सूक्त में कहा गया है कि जो रूप ही शून्य है, शून्य ही रूप है. So, the physical form is empty. Empty is form. Now, in this case, empty of the form. So, empty is the basis. Form is the basis. The empty of the form is the chechu. Its quality. The very form, that existence is not by itself, as quantum physics say. If you investigate, you can't find objectively. But it works. So it exists. Now, for example, if you analyze, you see, yes, now, for example, if you analyze my hand, you can't find piece, particle. Just wave. Nothing. But you can't say, now, you cannot use hand because you can't find. Objectively, it does not exist. It's foolish. Very useful here. Like that. So then, hand is there. Even animal, you see, kasate, recognize. You see, when your dog become a little bit naughty, like that, the dogs also, you see, realize, oh, it's effect. However, if you investigate, you can't find. So, hand exists. But if hand, its existence, the way appears, then the hand must exist objectively. Then, when we find out, analyze, you must find. You can't find. So, absence of independent existence, that is shunyata. So, form is its own emptiness. The form's emptiness is form. Patita samupanda. The Tao of physics. The Tao of physics. Kasa. Physics don't chikore. Oh, did it? Yeah, like that. Thank you. So quantum physics, you see, they try to find, they take for granted things must objectively exist. So when they investigate, you can't find. Then they find some dilemma. The Buddha, 2,500 years ago, and Nagarjuna, they already solved that problem. I didn't say physics, I said the Tao of physics by Fritjof Capra, who talks about the particle and the wave.
what you said just now. 가르사. the freeze cobra sing it tao physics e tepsi ti yorel 어. dinang la duten tu se cheba chi do din rabu she chans 어. What you Let said. that. Thank you. Thank you. Next question. Yeah. Your Holiness, I am a great admirer of you and of the Tibetan people, and I'm very happy to be here today. My question is very simple. Yesterday you talked about love without attachment. 음. So when I love people, my family, my friends, I get attached to them, and if they are not there anymore, then I suffer. So how can I love them without getting attached to them? Actual love, as I mentioned yesterday, which is not oriented about others' attitude. So, usually our love is very much oriented about others' attitude. So there is attachment. And as soon as attachment involved, it becomes biased. So, love, hatred go side by side. So therefore, in order to develop unbiased towards the love, firstly, you have to practice detach, equal. Then develop love towards entire sentient being, or love equally your friend or your enemy or strangers. That's a genuine love. That not spontaneously come, but through training, use our intelligence. Okay. Okay. So not easy. Genuine sort of the kasurda love with attachment is more or less spontaneous, biological factor. However, that is as a seed. Then use human intelligence. Then it become higher level, detached. Meantime, fully sense of concern of their well-being. Okay. Thank you. Your Holiness, thank you for teaching in Bombay. I have a small doubt. While doing the Lambram prayers, when we do the supplication practice, we usually do the supplication first to the lineage of extensive deeds and then to the supplication to the masters of profound view. But in the teachings that you were giving today on the invocation to the 17 masters of Nalanda, we did the profound view first and then the extensive deeds. Is there a significance in this, or is it just Kasa. Lama Chopa teachings? We first do the supplications to the extensive deeds and then to the profound views. So the first we do Maitreya Asanga and all that supplications, and then we do Manjushri, Nagarjuna and so on. Whereas today we did the first one, the first set is the profound view, and then the second set is the Ka. korim ki chebar jorol Ka. tanda de pendup chu dun tanda sundip tin cheba kablas Oh. di korim ji yorwas Oh. namju nga zu jashin chu ju da samudai ju du se korim do dan ji do was Oh. ti da tes majun ba ji du ti karinas samudai Korim ju de- ngel yo That day, kasa squinces are. Squinces, the 17 masters, not necessarily teacher, student, no. Some like teacher, student, some not. I simply sort of say compose that. Firstly, Nagarjuna, of course, senior. Usually, Upaya, Branja, Upaya come first, or right side. Branja, left side. So, according to that, Arya Asanga, right side, Buddha's right side. Nagarjuna, left side. But now here is the seniority. And also philosophical view. The Madhyamika philosophy is the best one. You see, you can use, including physics,
quantum physics, and many scientific findings very well go with Madhyamaka philosophy. The Chitta Mantra philosophy, if you accept that, there are a lot of contradictions. So therefore, philosophically, the Madhyamaka philosophy is most profound sort of philosophy, and also the historically senior Nagarjuna. So in the Nagarjuna and his immediate follower, Arya Devadis, and then Arya Asanga, Bosubant, Dignak, these things. So then, detail, a period when these of the master born, I don't know. So, Western scholars, they know very well, oh, this master born such year and died such year. We don't know. We pay not much attention about sort of date. We pay more attention about teaching, their teaching. So some of these Western scholars known very well, date these things. They do not know what is the teaching. So, like medicine, yes, there is sort of date of expiring, expire. But teaching of these things, no expire. Thank you. So it doesn't matter when it happened, that doesn't matter. So long, the teaching really something can prove through argument, through reason, through scientific sort of finding. Then actually affect our emotion. That's important. That I can say definitely. Of course, the Chitta Mantra's philosophy does not affect my mind, my emotion. Madhyamaka philosophy really affect my mind. So, I consider myself a follower of Nagarjuna, not a follower of Arya Asanga. Thank you, Your Holiness, for your presence. Thank you for your presence and your blessings. I would like to know where Vipassana fits into the Tibetan Buddhism, the practice of Vipassana. Vipassana kasa, rational kar. Vipassana di kawal fit chigiyunas. Ka. Pepe nangjo nala vipassana nyamlin che di tabro kawachik likigiyunas. Vipassana, different levels. Or Vipassana, according grosser level of anatma theory, or selflessness theory, grosser level. Yeah. And then Vipassana, more subtle level of Vipassana, a more subtle level of anatma. Then it involves shunyata. Okay. Yeah. Then Vipassana combined with the deity yoga, visualize oneself as a deity or as a Buddha. Another level of Vipassana practice. Then Vipassana, the mind, according Tantrayana, particularly Mahadudra Yoga Tantrayana, there are different levels. Grosser level of mind, with this physical, a mind which based on this physical is grosser level of consciousness. At the time of dreaming, another level, more subtle level of consciousness. Deep sleep without dream, another deeper level. And faint, another level of consciousness. Usually we call unconscious. But actually the energy or potential of awareness still there. Otherwise, once you faint, then impossible to recover. So the continuation of subtle level of consciousness still there. So the deepest at the time of death. Now, actually, last, I think last about now 55 years,
number of occasions, Tibetan practitioner, after death, clinically dead, brain no longer function, dead, but body remain very fresh. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, like that. I was told one Christian priest also, you see, remain a few centuries, his body remain fresh. So, in any way, we explain the grosser level of mind, consciousness, completely cease because brain cease. But subtle level of consciousness still within the body. So some effect from that. So a few years ago, one great master, after he passed away, about 그저래 치수름시 니마 그저 쉬우래. 가. 유스텝시. That master, after death, about I think 23 or 24 days remain in Montcourt. So we already have a sort of trained person, nurses at Dharamsala, and with certain equipment. So as soon as, after I think 4 or 5 days, as soon as I received the information, his body still remained fresh. So I asked the concerned people, should go there. So they went there and put all wires on dead body's head. So remain another sort of few more weeks, you see, remain, as I mentioned earlier, about 23 or 24 days. So some scientists, when they read the sort of also the indication through wire, they found some electric sort of wave in their brain. They say, normal way, impossible. One strange thing, and I think 3 years ago, in New Zealand, one Tibetan practitioner, in hospital, he passed away. So his body remained very fresh. So then, doctor, usually, you see, dead body, they do not allow remain in the hospital. But then doctor come, examine. They found this body, dead body, very fresh. So they allow, okay, you can remain that dead body in the hospital. So it, I think, fourth night, the originally, you see, the body, I think hand remain like I think usual way like that. Then the fourth night, next morning or fifth day, you see, they found his left hand now very tightly, you see, hold the one finger of this hand. So later I told them, oh, it is really pity. You must keep camera. Then we know how it movement, how it come. Pity, they not prepared. So it is fact. You see, the dead body, the fourth night, actually, you see, movement comes. So even we, difficult to explain. The all grosser level of mind cease. So physical movement, one of the grosser level of mind consciousness or energy. So that already stopped. And how it moved while the person remain in deepest, most subtle consciousness or energy, consciousness and energy. So we also, you see, feel some kind of dilemma, how to explain, like that. So it happened. So this shows the consciousness which based on brain, and then difficult to explain these things. The brain dead.
So consciousness, which brain on, which because of the relying or based on brain, no longer there. Then how it happened? So we say, basically we say that person, the innermost subtle level of consciousness still in the body. So that through training, it can become wisdom. That's most powerful vipassana. Thank you. Clear? Thank you very much. So variety, many different level of vipassana. How do we maintain equanimity in these days of lies and corruption? Because Karsa. it's so deeply rooted in everyone and everything, lies and corruption, that it's difficult to not be agitated and maintain equanimity in that time, in these times. tingsa tuju de pe tukcha chimbo che ane corruption da pension jig macham ba da ta sangi singi hibu jiwe kabla ane jig ta equanimity tanyom chol ne tuye hiding al ne tuye thabji khari yon. I think the 6th chapter, this book, which I'm going to explain, and 8th chapter, really very helpful. Thank you. You see, the equality, sorry, Equanimity. ka tangyum, kaza. Equanimity. Equanimity. Balance. Impossible. Come from outside. Some very successful, some unsuccessful. Huge gap, rich to poor. Education level also is some are highly educated, some are not very educated. Then equanimity, mental level. Think, as I mentioned yesterday, we all 7 billion are human beings, same. The way born, way to die, same way. The emotion, same. So that is, I think, a very powerful sort of reason to think, to consider entire 7 billion human beings are same. All have same right, same desire, same right. Then further goes entire sentient being, including animals, birds, insects, these. Maybe mosquito, little bit exception. My relation with mosquito sometimes not very good. Otherwise, you see, we can develop from the bottom of our heart equanimity. That we can train. So can we not kill a mosquito? Are we allowed to kill mosquitoes? Mosquito, when my mood is good, then some, and also the mosquito quite sure that particular area, mosquito, no malaria sort of danger. Then occasionally I give blood to mosquito. So then my curiosity is, mosquito, when you give blood, they suck. No? Then his or her sort of body become red and fat. Then sometimes poor stanche. Send out some kind of bubble. From his bottom. Then he left. No indication of appreciation. So dogs, birds, if you feed sincerely, they appreciate, isn't it? So I really, you see, curiosity, the brain size, which size have the ability to show appreciation. One time in Oxford, it's my talk, in the front line, some professors of Oxford, I asked them, anyone who have some knowledge, you see, which size of brain have the ability to show appreciation? Then nobody speak. Remember like that. So like that. Thank you. Thank Deep you. appreciation and gratitude. Thank you. Thank you. Thank you. Holiness, I have 2 questions. One is, how can I overcome fear, jealousy, ego and anguish in my day-to-day life? Karsa. Nyiri nanglo la
suzu nyere mize nanglo la ene shena da semma ki ba da mile thakdo che da suzu nyung du khandes tango inas. I think 8th chapter, 6th chapter really deal that. For me, very, very helpful. 1967, I received oral transmission of this book. It really bring change. My mental state. Really immense help. Okay. Secondly, sir, what is the secret of your childlike laughter? That's my top secret. I do not want to share with you. I think smile, laughter, spontaneously come. I think one basic reason, my mind always completely relaxed, no problem. So when I give talk, for example, like here, talk, I never felt I'm something special. I'm Dalai Lama. I never felt that. I just think, yeah, same. I'm talking another human being. That's my feeling. So when I talk with one person, or 10 person, 100 person, 1,000, 10,000, 100,000, no differences. So that really brings me, relax. If I sort of consider I'm something very special, I'm an important person, then each word you have to sort of carefully check. That brings more stress, more anxiety. Then even small mistake happen, then your face becomes red. Useless. Self-torture. If you consider you just one of them, the same. You have emotion. I also have emotion. Sometimes emotion creates some trouble. So like that, no problem. Honest, truthful, transparent. These things are very, very important to maintain peace of mind. Yes? Thank you for your teachings. I practice Vipassana in the tradition of Mahasi Sayadaw of Burma. And I have a question regarding balancing pragya with compassion. Because as I keep practicing, I notice how things change. But then I'm sometimes confused, how do you balance compassion with wisdom? Sometimes it's better to do, and sometimes it's better not to do. So I just was wondering if you had any. Kora Brahma ni yunge lama chigi chuju nyamle che ne vipassana nyamle chigi yose. Ente da chap chig do sam nyingje nyamle che bezon chigi yose. Nyingje. Lare. Da tingi nyam do sungre nyamle che la tes kangi theg dos. Sam ne ya nyingje go ne hendo che ne yaga yobe soro. Sam ne ya tes maje ne yaga yo soro. Chig ti tes chikangi theg dos. Wisdom da compassion nyam do. According these great masters sort of advice, our mind, our emotion, very sophisticated. So like illness, many sort of, because of the different virus or different things you see sort of involved, then just one sort of, one medicine, you see, cannot cope. Right? You need, say, more kasota, chick, ka, da kada, nuba changsi member, mentos, nuba, naso zom devati. If you are afflicted by different viruses, for example, then it is skillful to use a medicine which has different potential to deal with all these different effects that has received in your body. Just one illness or one virus, then just one special medicine can effect. The illness much involved,
then just one medicine is cannot sort of cure. You need a variety of medicine like that, including diet or exercise, many things. Similarly, our emotion, very, very sophisticated. So one single practice cannot cope. Therefore, variety of sort of method and variety of meditation and vipassana mentioned. So therefore, again, my advice is more study, should acquire more knowledge. Then I think the practice of Dharma is something like combat. So even the physical level, combat with warfare, combat more sophisticated enemy, your side also must have sophisticated sort of method. So similarly, our enemy is our destructive emotion. It's very, very sophisticated. So the counterforce, wisdom, also must be sophisticated. Just a single sort of faith cannot cope these sophisticated sort of inner enemy. That is because of clash survey. Clash. Very complicated. Okay. So again, my advice, read more books, study more, should not rely on one source. Okay. Thank you. Oh. Yes, yes. My respectful obeisances to you, His Holiness. I want to ask a simple doubt. In your yesterday's talk, you said that Jainism and Buddhism, they emphasize on vegetarianism, but we see that Jain monks follow this principle of vegetarianism, but many Buddhist monks, they eat non-vegetarian food also, and whenever asked, they reply that we are not directly killing the animal, therefore we are not the part of the sin. But whatever comes to us while begging, we take that. But this is not logical, and instead I feel that there should be education about not killing the animals. What is your opinion on this? Yes. Oh, please explain. The Jainism, the Nangju, you know, Niga Chetan non-violence practice, Shukchimbolab Giores. Nangju da Jainism. Jainism. Ina the Jainism di pete Karjong Chang Tingiores. And Nangbegi da Gundibaduzola Dusu Tibikabla, and then Gantu Kanzu Nesimjin Sochi Yomares, and the Sosu Chikta Kari Toba deep Lungsig your Tuxilabje, Takaji Shasang in the Dukes. The Jumze Yanta was Kate Hongumandus, and a Koyan Tablam Chikton, bed the Pantone Yakumarves. Yes, I agree. Therefore, as I mentioned yesterday, we totally committed promotion of vegetarianism. At most of our bigger monastic institution, now they are common sort of kitchen. Now stop completely serving non-vegetarian food. So we fully committed like that. So I appreciate your suggestions, your views. Very good. Thank you. Now I think the last question. Yes, I have Holiness, to go. many religions believe in the theory of incarnation. So, as you mentioned, there are 7 billion souls in the name of population in the 21st century. Then in the past centuries, there were less population. So, where were these souls before? I think if you believe Creator, then ask Creator. No,
but I want opinion from you because you are the 14th Dalai Lama. So, please, everybody is asking. You know, Yeah. you see, I think basically, you see, the old major religious tradition, you see, deal with three sort of questions. What is self? First question. Second, whether that self beginning or not. Third question, whether that self have end or not. Three questions. So to first question, these three questions raised at Amritsar, one international sort of interfaith sort of meeting. One Sufi professor, you see, mentioned that. It's really wonderful. So all major religious tradition, you see, deal these three questions. Now, number one, what is self? Except Buddhism, all tradition except soul. Buddhism, is, as already we discussed yesterday also, you see, we accept self there, but self, not independent, separate sort of soul, separate self, beside body and mind. So this is the answer the first question. Then whether there's beginning or not, according to theistic religion, when Creator creates us, that's the beginning. According to Christianity, this very life is the beginning of soul. This very life created by God. So that concept also very, very powerful. So this very life, you see, created by God. So that means your God is truly your Father. So very intimacy sort of feeling with God. More intimacy feeling, more willingness to follow God's way is love. Very powerful. Then non-theistic religion, no creator. So the Jainism and also Sankhyaism. Actually, I think 2 years ago, I met one great the Hindu so the sadhus, really very, very knowledgeable. Unfortunately, many spiritual leaders, they are expert, they carry their pujas or these things, but real philosophical knowledge, if may I say so. So, perhaps now, maybe you see a little bit sort of show off, show off. But as a sort of as a student of a Nalanda tradition, and when we discuss, then difficult to develop admiration. Clear. So we study years rigorously, and variety of, as already you see, you heard, you see the way we study. So that great sort of spiritual leader, really wonderful. Hindu follower, worship Shivaji. I also received some sort of also the ritual. Very good. So he knows different philosophical views, including Nagarjuna's view, Nagarjuna's philosophy. So I had sort of lengthy discussion with him. Then I learned, previously I'm not very sure, not very clear, according Sankhya philosophy. Then it becomes clear according to Sankhya philosophy, and also I think Jainism and Buddhism, these three, since no concept of creator, so our being beginningless. And also according to Sankhya philosophy,
when we reach nirvana, Atma alone remain there, because of all phenomena, because of the dissolved in the jizo, in the primal factor, they call it primal factor. Dissolved that, and then self, Atma alone remain. That's a permanent sort of salvation. Right? That's moksha. So, no end. So similarly, Buddhism also, you see, no beginning, no end. So according to theistic religion, there is beginning. Non-theistic religion, no beginning, no end. So then world, now even you see this scientifically, when you see the more powerful sort of kasa, telescope. A telescope, you see, no limit of galaxies, limitless galaxies. So it is impossible to say only this Milky Way galaxy we human being there. Other limitless of galaxies, no sentient being, no human being. How can we say? So limitless. The Buddha stated limitless world. So we just like tourists, we fed up in some galaxies, then somehow we come here. Then a lot of trouble here, fed up, go another galaxies. And we have return tickets. Thank you. Thank you so much, His Holiness. Yes. Now remaining questions, I think, no, not now. No. I think tomorrow. Okay. So now, in order to achieve good life, mainly human life, where human being, now 10 kasada sinful action, like that. So it mentioned. Tadinda, kanshi lunga yile tamjel lekore yong tangde. 다다 펜션에 다다 샹라 펜션에 다도 셔바 데켜봤어. 다 미기 주디 소 미주바 직셔. 머질린 뽕 니체. 그래서 미기 주봉 수준들다. 미기 주봉 수준들. 현지 충무 뽕 로인 뽕 직셔. 되는 록사디 준셔. 준 참아 식주 만제와 사데 나케체. 제니 룡하게 미교 düğünce. Dene 차던 nösen 매바바 니기 따와 용봉와스. Dene 가소르데 낙심 nösen 록다 숨부데 뽕제님. 다 미기주 뽕디. यानी कार्बोलालम चू रेस. फिर इसके बाद अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छा जीवन अर्थ में मनुष्य रूप में अच्छा जीवन पाने के लिए 10 अकुशल कर्मों को नकारा गया है और उसके विपरीत 10 कुशल कर्म करने के लिए कहा गया है. तो 10 अकुशल कर्मों में पहला हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, एक दूसरे के साथ में क्या करें बकवाद न करना इत्यादि प्रकार के जो 10 अकुशल कर्म हैं इनसे बचना चाहिए. और ये जो 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं हमारे चित्त से, शरीर से और वचन से होते हैं, तो इनको बचने की कोशिश करनी चाहिए. ताती मिगिचु पंबे कार्बो क्योचु थोलया यानी 창 밑에 것 직체. 소화 상황에서 돼 록수 말해봐. 록수를야 아니 규요다 가서 그래니 꿀lun구요. 저는 어떤 얘기 다 간다.
losu malaba dinde kita soa sawa dene ini number misewa seadi chikta so joba rai member yanchi milia chiki kasuri pege 지 동지 동안 서로 저기 차바전 저기 나와 제야 서로 딘딘 저기 단 미치바 넘버 미쳐 되네 그 진당스 지 진배 내거를 그거도 전에 아니 진버셔봐 아주 넘주 진버셔야 돼 지금 멤버들 마치 다 지금 든주실 지 대배 서로 지금 딘딘 멤버 그 시험도 제 그러다 전에 아니 시안을 그게다 진보동 그 진당스 최바스 지금 수수 파마다 연대전다 랑래 이니 gem바 정말에 지금 여러 잡아 상고 여다 지 디지털라 이니 그게 그십셔야 최바다 전에 참바스도 군리야 라는 내가 챙긴 그 심전이 이니 대화도 된데 그 참바 세지도 그게 인연 바꿔 봐 리스 맞춰서 참 바꿔 봐. 저 되게 안돼 닝지 초롬에 닝지 시합은 시 초롬에 참배심 데스 너는 최니 되는 스타 최주주 숨으래 뭔도 주야게 다 미기 주분 거 주진 거 타네 뭔도 루진 주야지 다 되네 안데디 가서 저기 창암 동화도 다 창암 동화데 배시 파유 영향이다 창기 라스는 밤에 차도록 봐. 자, 드네 인도산에 창암 동화데 딱그 냠네 신다디 영향이 튠징소를 차디하래. 다 전에 로스 밀레바다 지금 차와 미집으로 써도 이디기 남민기 류대 남민기 연대 개 소야로 된데겠다. 제가 수상와도 dob쳐와도 세정와도 남에와도 써도 된데기 남미 연대 개 상지기 류대 상부 톱토야. 어디 디주디디 어디 디송을 최주주 송이 말이야. 띵안서 로도 송 이미 깨져 야 말이야. 딱 간다 사제배 최칭에 3월 어디 कैसे यह में बचने न्यामने चुकाया रे फिर अगले श्लोक में शराब न पीना अर्थात जो हमारे हानिकारक नशीली पदार्थ हैं उनका सेवन न करना तो शराब न पीना फिर अपना जो जीवन है जो सादा जीवन का पालन करना दूसरों को नुकसान न पहुंचाना दूसरों का सम्मान करना और फिर दान देना और सभी लोगों से प्यार करना इत्यादि प्रकार के जो हमारे 10 कुशल कर्म हैं उनको करना चाहिए। बड़ों का आदर करना जैसे चाहे हमारे माता पिता हों गुरु हों या हमसे हमारे पूर्वज हों उनका अच्छी तरह से आदर करना चाहिए। और जहाँ तक दान देने की बात हो वहाँ अच्छे ढंग से दान देना चाहिए। ऐसे नहीं देना चाहिए कि जैसे कि किसी जानवर को तुरंत फेंक के देते हैं उस तरह से दान न दे करके बड़ी श्रद्धा से बड़े अच्छी तरह से दान देना चाहिए। और सबको प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आप के प्यार करें एक दूसरे स्नेह करें तो जो आपका करीबी है उससे ही प्रेम करें। ऐसा ना करके आपका जो दुश्मन है उससे भी आप प्रेम करना चाहिए। और ये अगर हम इन 10 अकुशल कर्मों का अभ्यास करते हैं अगर अपने जीवन में इनको ढालते हैं तो हमें जो अरहत पद प्राप्त करने के लिए लाभदायक होते हैं। इनसे इनके अभ्यास करने से हम पुनः उच्च भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ शराब पीने के लिए इसलिए मना किया गया है कि अगर हम शराब पी लेते हैं तो उसके बाद जितने प्रकार के हमारे कर्म हैं वो सारे के सारे गलत होते चले जाते हैं और इसके वजह से हमारा जो बुद्धि है हमारी सोच बदल जाता है और हम प्रमाद में पड़ जाते हैं। हम आलस्य रूपी अपना जीवन शुरू कर देते हैं उसमें जीने लगते हैं। और हत्या नहीं करना चाहिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे जो जीवन है उसका जो जीवन की काल है उसका जो समय है वो संक्षेप हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा। तो इस तरह से अपने जीवन को लंबा रखने के लिए अगले जीवन को लंबा रखने के लिए हमें किसी की हत्या नहीं करना चाहिए हत्या से बचना चाहिए। और जो सम्माननीय हमारे गुरुजन हैं या फिर हमारे पूर्वज हैं उनका भली भांति सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से हम 10 कुशल कर्मों का अगर पालन करेंगे अभ्यास करेंगे तो हमको पुनः उच्च यौन में जन्म मिलेगा।
다전에 미기 주자베이나 아니 디 제부 냐바 용그레스 다디 쇠바이니 치종조 넘버 7 나바마 고웨이니 롱조퐁 셔서드는마 미기주 제부디 소모레 자장가 나민이 제불이야 삼단에 진주지게다 교디 아니 dom거야 빵거야 들이 तो इसलिए अगर हम अकुशल कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो उसके परिणाम भी बुरे ही होंगे। दुख उनके द्वारा हमें दुख ही मिलेगा। अगर दूसरों को हम नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हानि पहुंचाते हैं, तो अर्थात कहने का मतलब जितने भी अकुशल कर्म हैं, तो अकुशल कर्मों का परिणाम भी उसी प्रकार से हमें अकुशल ही मिलेगा। 다리 세부도가 그냥 다나 세부도가 너 अच्छा जब लोग ही वे आप लोग जो ग्रंथ है उसको पढ़ रहे हैं, जो नागार्जुन का रत्नामणि इस किताब में दिया गया है, आप लोग उसको भी देखते जाइए। अभी श्लोक नंबर 14 पर पहुंचे हुए हैं। क्या होता है 참자라 제부테니 डॉक्टर जोंस्ता मिगिजु 제부디 샤니 다 मिगिजु 돈베 아니 कार्बो 기주 मिगिजु다 아니 대안다 가래지 최주로 돈베 아니 제부 상보 용그레 선 송샤 इसलिए अगर आप कुशल कर्मों को करते हैं, जो 10 कुशल कर्म बताए गए हैं उनका आप अभ्यास करते हैं, और उसके विपरीत जो आपके 10 अकुशल कर्म हैं उनका अगर आप निरोध करते हैं, रोकते हैं, तो आपका जो परिणाम है, जो फल है, वो भी कुशल परिणाम अर्थात फल आपको प्राप्त होगा। 다 대대비 지 대부 냐바용야 게 레소야 생에디 랑 대베 당도란디 지금 말이 간다 가는 상월로 동해 면대버리 대원도 비슷하네. 제대인에 아더 10월에 송요를 준준하래야. 아니 동해 돈도 로여장 동해 일은 뭐버 죽스. 대원 대장 띠무베 랑게 대와 다들 좀 쓰네. 간다지 그게 나도 મં구지 변 통기라 어제 답변 상물하고 싱글어. 미세나 딱 저는 누구리 또 년에 지금 소도 예버 동양 냥가 요래 레디네 미생 연구 요래 단디 그도데 너무 쑥 타고 쉬우시게 디 모르는 거 이거 신기리야 너무 배 샤원을 따네 아니 레서 요래 자 진짜 인도잖아 다 싸워디 된대기 다 미기주 다는 지 미기 왔다 변에 주루 안다 디 도미야 영향하게 탑시 쪼로디 그놈 생겼다 녀몽기 로텔라 녀보던 거래 지송겨 다데 차단 셔단 띠무다 대예래네 미기와 마샤 셔단 띠무미 대예래네 겨인 너르드나 녀몽 독숨기 끊을란데 레사셔바 다디 띠무세디 페지 다 대자고므로 미시바자로 자금에로 생기 다 띠무 조단은 차라이 물어봐 전다 띠무 다 미시바자로 자리이나 딱 가도 랜드를 몽베 머리보다 대코나니는 뭐 머리고 찌르고 거다 즉 머리보스 미시바스 럽샤나 다 들저 그래 자장가 현지 착과 신의 당외 당와 되네니 인루를 딱 가서 그게 제 간단 내주 뭐마데 마셔버치는 달라 몽상게 몽버직 애니 낭세기 치즈로도 똑배 몽버직 야니 연구도가 되네 인도 되네 띠무 되게 애니 령아 예수가 네바지도 타는 거래스 다 마샤 미장 띠무 메시네 마샤 시단 띠무 메사 되게 띠무 메베께서 드샤베베께서 시나베베께서 되게 아니 레겨와 쌓인 거래스 어떤데 인들 자 디레 인들 전에 다 미기 주 아니 가서 그러다 다 미기와 다 간다 그게 dom고야겠다 레 주루데 dom야 그 dom단데 커도라 내 소하잖아 예마야를 sabah 대자 뭐임 봐 사회 그게
꾸니 롱지기 뉴모로도 냐못된 거래 스타디시도 또 뉴모기 냐못대하다 샤므려야 돼 타버드야 그걸 되게 하래 다다 금들이야 뉴모리아 에네 당도 지켜 말이스 तो इसलिए हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी हो, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि उनको सुख मिले और किसी प्रकार का भी दुख न मिले। तो शांतिदेव ने भी कहा है कि जब हम लोग सुखी ही कामना, सब लोग के सुखी ही कामना करना चाहते हैं, तो कोई भी तो उसी प्रकार से हमें जो सुख किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है उनके कारणों को या उनके वजह को जानना चाहिए और उनका अभ्यास करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा इच्छा करते हैं, लगाव रखते हैं, तृष्णा उत्पन्न करते हैं, तो ये सारी की सारी जो तृष्णा या लगाव या घृणा या द्वेष, ये सारी की सारी हमारी अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होती है। तो इन चीज़ों के जो वजह है, जो कर्म हमारे अकुशल कर्म उत्पन्न हो जाते हैं, उनको रोकना चाहिए और जितने प्रकार की भी हमारी अज्ञानता हैं उनको काटने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अगर अज्ञानता को काट देंगे तो उससे हम जो हमारी तृष्णा है उससे हम विरक्त हो सकते हैं, जो हमारी द्वेष है उससे हम विरक्त हो सकते हैं, और इत्यादि प्रकार के जितने भी क्लेश हैं उनसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम क्लेश इत्यादि को नहीं काटेंगे तब तक हम जो हमारे गुण हैं, जो अच्छे कुशल कर्म हैं, उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर हम संक्षेप में यानी कुछ सारे के सारे अकुशल कर्मों को देखें तो 16 प्रकार के अकुशल कर्म हो जाते हैं, तो इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम कोई अकुशल कर्म करते हैं, किसी की अगर हत्या करते हैं, तो नियम अनुसार हमको जेल में जाना पड़ता है, उसका दंड मिलता है। तो हम इन सारी की सारी चीज़ों को जानते हैं कि इसका प्रभाव कैसे होता है, हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो तब भी इनको ठीक तरह से समझ करके इनकी जो दुष्प्रभाव उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और इनमें ज़्यादा आसक्त नहीं होने चाहिए। और जितने प्रकार के भी अकुशल जो हमारे कर्म हैं उनको कुशल कर्मों की तरफ मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उनके द्वारा जो हमारा फल है तो उस फल भी उसी के अनुसार विपरीत प्राप्त होगा, अर्थात गलत प्राप्त होगा। तो हमें इन बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों की तरह लौटाने की कोशिश करनी चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए। आया 전이다 나도 먹고지기 차당을 하면 당도 지금 소리도 와. 자장가 처진에 I think in order to restrain harming other, we have to deal the motivation level. Usually, I think all these destructive emotion, we take for granted this part of our mind. You see, I think generally, we never pay attention. Try to reduce these things. I think here, as I mentioned yesterday, the ancient Indian psychology, including Buddhist psychology, it mentioned the 6 main minds. And then, minus is secondary. Secondary mind about 51. So there are different groups, destructive emotions, mainly 6, then 20. Another five group of 5 is the every sort of the mind always to see 5 aspects. Omnipresent minds.
Then yunging Then 5 minds ascertaining objects. oh, gyawachukji, 11 virtuous qualities. shinjurshi. And then 4 changeable minds. So you see, there are many details of explanation about sort of the consciousness or and including emotions. So it is very, very important in order to deal the motivation level. It is very necessary to know the whole sort of the system of emotion and its own causes and because of conditions. It's very, very essential. For example, practice of love or compassion. Just you see, repeat 1,000 times, love, 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 not much sort of effect. So we must sort of know the causes or conditions of love, the opposition of love. We should know. Like you see the specialist for certain disease, you see, have fuller knowledge about the causes of the illness and then antidote of that sort of virus or that illness. So with fuller knowledge, then deal these sort of particular sort of illness. Similarly, emotion, the destructive emotion, you have to deal with fuller knowledge about the counterforce of that destructive emotion. So that's why we call training of mind. Training mind, firstly, should know the system of the mind or emotion. Then bring conviction. Oh, this mind, this emotion, very, very harmful. I must reduce. So through that way, you develop some kind of willpower to combat that emotion. Then the weapon to combat that emotion is wisdom side. I think self-centered attitude, the counterforce is altruism. The distorted ignorance for that sort of the counterforce is wisdom. Not that, like that. So therefore, so you see, usually we simply take for granted anger, attachment, all this. I think actually, the biological factor, what do you call the mandala, brain, mandala. Amygdala. Oh, you see, how to say the basis of development of these emotions. So we consider this something normal. But through experience, it's clear we can change this emotion with the help of wisdom. So therefore, they usually you see people who more sort of more self-centered attitude and more aggressive, then people say, oh, that's an able person. More compassionate, humble person. And then some people may take advantage. Isn't it? So in the society, we're full of competition, full of so negative emotion. Then these destructive emotion, sometimes you see, consider something helpful. That's a mistake. So now, scientists, medical scientists, they say constant fear, constant sort of anger, hatred, actually eating our immune system. That's not Buddha's teaching, but scientists now say that. So very clear. And then way to develop these destructive emotion, as I mentioned yesterday, some scientists say these emotion very much based on mental projection. So that comes from ignorance, lack of knowledge about the reality.
So like that. So I think most of you understand English. Those people who do not understand English, raise hand. Almost none. Then I think, yes, then briefly translate. No, not much time. तो प्राचीन बौद्ध परंपरा के मनोविज्ञान परंपरा के अनुसार देखा जाए तो हमारे चित्त को प्रमुख मतलब 6 प्रमुख चित्त के रूप में और 51 चैतसिक रूप में बांटा गया है। उनमें से 10 कुशल और 11 कुशल प्रकार के या 20 फिर क्लेश इत्यादि प्रकार के चित्त में बांटा गया है। तो इन सारे के सारे सिस्टम को या फिर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहिए और हो सके तो हमें प्रेम और करुणा का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए मैं लगभग एक दिन में लगभग 20 या 12 इससे ज़्यादा इसका अभ्यास करता हूँ। उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो प्रेम के विपरीत इसको रोकने का वजह क्या है, इसके जड़ को भी जानने की कोशिश करना चाहिए और जो बुरा विचार है उसको नष्ट करना चाहिए। अगर अकुशल भावना अगर हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो वो हमें मुश्किल में डाल देती है। इसलिए अपने जो चित्त है उसका प्रशिक्षण करना चाहिए, उसको अच्छा करना चाहिए और बुरी भावना को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि अकुशल कर्म से हमारे विचार भी अकुशल होते जाते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए और अकुशल कर्मों से बचकर हमेशा रहने की कोशिश करना चाहिए। ये अनुभवों से सिद्ध होता है कि अगर हमारा चित्त अगर गलत है तो हमारी प्रकृति भी बदल जाती है। अगर हम ज़्यादा घमंडी हैं या फिर संकुचित सोच वाले हैं तो हमारे जो सोच विचार है वो भी बुरी हो जाती है। आज के समाज में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा एक दूसरे में के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे से भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो इस समय भी बुरी भावना उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक लोग भी ऐसा मानते हैं कि चिंता, भय इत्यादि हमारे शरीर की क्षमता को नष्ट करती है। ये कोई भगवान बुद्ध के वचन नहीं है, ये हमारे एक जीता जागता उदाहरण है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये आता है। इसलिए हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें बुरे विचारों से बचें और अच्छी भावनाएं का अपने अंदर उत्पाद करना चाहिए। 다들 현재 냐와 이다다 전주달에 남주싱스 대대비 미기주 에는 쿼터셔버 그게 빵배 에는 먼들류된 토크레스 당 먼들 나네 장다 가셔볼 그게 다 지리 안에 디도가 시워 코에 풍부 패야리야 소나마인 벨레 사디기 둥이 둥에 슉 잡고 여댕에기 년로패 소나물레 사디기 에네 응원들류된 다 응원들 해미류된 거다 응원도 미류된 또다 에네 더라 토비하기 규칙 다 미유를 해야 되게 삼단도 숨밀 기하기 레체니 코아펜직 레지 미라직 숨쉬기도 와. 그 대부 테메 예배 왕기. 사진이 이미지 전에다데 전주달에 남주신 하다 미 낭다도 대배 계시 개버 톱시. 삼단 세미 숨미 이제 창소 대와 용어치. 어다 대대변에 삼단다 지금 숨미 띵인지 냠네 제일도 전에 아니 메유에 사네 감공기 아니 걔는 죽그리스 디송래 자다데 디어라다 직전별 항동서야 지다 지들 레벨 항동 비바사나 니식도 와 직전별 항동 15코어 루지기 항동지 시기야래 디 학벌 통서야 서로 거절했으나 랑살을 rakwa 바래 다 와살을 rakwa 아니 광살을 아니 다 쉬워 간다변다 가서 올나 다 지지거래 다 가다 랑살 라고 다 대박함지기 소술 랑산 대박함디 배 대변 용목 숙심부 여다 버진데 다 라고를 때 봐. 아니 수수미 감 공마디디 쉬워를 때니 딘데기 다 달래니 신수술이고 이제 매바 이제 가디베 이제 사르 딘데기 다
이지 투사 되게 더네 다 방동식도 와 시라가 나버 직대별 방동사야 디ቋ음네 에네 삼대도 숨밀기야 디셔베레 그래서 어디 대대별권에 에네 뭔도 삶이 류된 상고 타야지 두 tellatene debutate ngondu chigres ta degi nego ngondu degi tuya ta de sonre अगले श्लोक में खास करके कि हम किस प्रकार से उच्च जो हमारी योनि है उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारा रत पद या बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम इनका अभ्यास करते हैं, अगर हम अकुशल कर्मों का अभ्यास करते हैं तो उससे हमें चाहे वो नरक योनि में अर्थात या प्रेत इत्यादि में जन्म मिलता है, और अगर हम कुशल कर्मों का अच्छा अभ्यास करते हैं तो हमें उच्च वर्ग में अर्थात मनुष्य या देवलोक में जन्म मिलता है, तो उनका हमें अभ्यास करना चाहिए। और उसी प्रकार से अगर हम चार अपरिमिताओं का अभ्यास करते हैं तब चार अपरिमिताओं का अभ्यास करते हैं और इन चीज़ों का अभ्यास करने से चाहे हमारी समाधि या विपश्यना इत्यादि में हमें प्राप्ति होती है। तो जैसे जैसे हम इन क्रम से जो हमारे अकुशल कर्म को अभ्यास करेंगे तब जाकर के हम अकुशल कर्मों का अगर हम निराकरण करेंगे और कुशल कर्मों का अगर अभ्यास करते जाएंगे तो हमें उच्च जो हमारी योनि है उसमें जन्म मिलता है। इसलिए अगर ज़्यादा अभ्यास करने के बाद भी जैसा कि कहा गया है कि ब्रह्मा इत्यादि के लोक में हमको जन्म मिलता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कि रूप धातु काम धातु और रूप धातु का जो अभ्यास हमें काम धातु में खास करके जो हमारे 10 अकुशल कर्म है उनके विपरीत अभ्यास करना चाहिए। और इनका अभ्यास करने से हम मनुष्य योनि इत्यादि में जन्म ले सकते हैं। ओया तादिने मंदु टेंसा जुनी ngelli 주야 봐도 숨기야래. 다 ngelli 탈바스야디 자가기 젠다 아니 가사주부티 장제바이 전에 탈변남산 두기야래. 다 산제베 탈바스 그리셔고 슬바이나 치지 신공소로 되면 버체 当的长征呗，既作为人心通呢，哎呢，那么就所有这边，那么就他到了，哎呢，所有赢了怕听起，哎呢，大西里几乎他这边可多了，哎呢，他把是写个的，是到底阿妈是这个人做这个多啊，这差不多，但上这边熊呢，大个小对几声。 테네 따와를 줄버 인스 두지 풍부 뒤동데 tel라 다네 여마 인스네 어다 데 디팔리 슈나레 여서레 레자 슈나레 요레 다도 따와디 아니 녀몽 싸치기 요레스 자상가 탈바스야 데 진리게 다도 따와디 아니 다음에 관배 토네 다도 따와디 신유 순충네 아니 다도 따와 도구레스 इसलिए अरहत पद की या मोक्ष की जहाँ तक बात है वो भारतीय परंपराओं में जैन परंपरा, सांख्यवादी परंपरा इत्यादि परंपराओं के लोग मानते हैं और उनकी अपनी अपनी मान्यता भी है। बौद्ध लोग भी इस अरहत की प्राप्ति के बारे में भी बात करते हैं, अर्थात अरहत पद को प्राप्त किया जा सकता है अर्थात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म में पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा दोनों के अनुसार ऐसा मानते हैं, ऐसा उसमें है कि जो हमारी आत्मा का भाव है अर्थात आत्मा के बारे में अगर कोई भाव रखता है तो ये हमारी ये गड़ी अज्ञानता है और इस प्रकार की सोच ये हमारी अज्ञानता की जड़ है, इसको नकारना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। अगर हमारे अंदर या किसी के अंदर ये विचार है कि आत्मा का अस्तित्व है तो ये बड़ी ही अज्ञानता की बात है, इसे दूर करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। 다 탈배 뭐 컨디션스 라베이나 다 될 좀더 공하게 샤다면다 요르디 다 우메베 슝네 아니 탈배 뭐마 뭐 쓰고 싶나
패지 심지 춘이들이 자 레드 자시름 나로 고불루 자시름 나로 레드 녀몽 세베 타르 셴 제네다 레드 녀몽 세스나 지 세바사디 게임 마사만 왕게 세바스나 패지 뉴젤 패지 고기야래 대소도 마세베 지 레닌 시괴의 패지 뉴젤 셔그래 자 되네 인도산에 다 레드 녀몽 아니 다소 녀모래 소 녀모 아데데 레다 녀모 세베타 레다 녀모 남도래 대다 저래 저번니 동보 니기 가고 줄스 제대제 맞아 표현을 요새부터 큰놈을 붙이기 레셰께베 그돌이야 레자 식들라 동보 니투 가고 줄스 자 니시 소마베 봐 니시베 동보 니투 가스 제니 동보 니기 가스 제대제 지주자 동보 니투 가고 줄스 레주스 없시다 도스레무도와 자장가 다 동번이를 몽네 동번이를 치질로도 또네 동번이 머리나 코 동번이 링나 타르바스 동번이 직 머리 니가 토네 콘데 셔야 독스셔야 자 드네 인도산에 동번이를 몽네 코를 경비야래 동번이를 몽네 녀모리 기야래 대다 저래 동번 대다 저래 저번에 동번 이진 가고 요 동번 이동 가고 요 소야 되기 심기 춘이를 먹네 어느 레서야래 다 레된 가야데 심기 춘이 뭔도 주네 심기 춘이 치머시싱에 애는 될 투중고 거 애는 성중기 예시 대내 공중기 냠용 깨네 디르메 고민도산에 심기 춘이를 몽밤 치질로도 또배 머리에 왕게 중에 아니 녀모데 상월로 취지 인수 다 줘야지. 그래서 드네 이르산에 타바타바스야 모든 조수서디 심지 춘이 들으셔야. 심지 춘이 루브르에 쯤어 녀부께베 떡이 다 단도 세베 심지 춘이 돼 타버셔야. 자 드네 이르산에 다 우모베 중게다 탈배 모로 샤인르산에 춘이 들으셔야 것도 심지 춘이 그래서 뒤대보도가 아니 감 대신 인부세야 뒤에 대신 내리사 그래서 지선 정신 내리선 송샤 뒤에 전문 마법의 심지 춘이 되가 삼다 다 전문타다 방배 내고 단지 최신 셈디 전문타다 방윤도산에 뒤된 게 춘이 뒤에 다 지면 타고체 대대비다 춘이디 탈사적사를 시행인도산에 정말 타다 방배 심지 춘이디 청주사들이 못이사야 못다 그래 못이래 그 못이래 모디 못이 지시 셈딩이 정말 마세가 받더라 그러다 아니 정말 세루이 뭐 정말 거루이인데 시에바 세리삼 뒤땡네 오늘 지시 정말 마방 베린달라 아니 정신 내리 세송샤지 정말 방배 내가 올라 청주사지 디 땡시 디땡 최전 다 조조 뉴메sem들이 뉴메sem디 마다 베린달라 감사지 디땡 정말 타다 세벤 내가 올라 청주사지 도스도와 자, 드네 인도산에 따오 디 스보 코아로 코야게 싸워디 머리부 제용구야래 뒤에 머리부 니체네 균제를 몽베 머리바다 대코나니를 몽베 머리부 니예베 딱 대코나니를 몽베 머리부 되게 아니 가서 그랬다 타바토를 객식이 인도산에 디 점베 아니 디 점베 제라 아니 타바토바 쓰기야래 어디지 말해. 자상 어디 녀리를 샤네. 지네들보다 녀리 톱이하게 톱지. 얘네 다음에 나와들이스. 전제게 다음에 나왔달라. 얘네 가란서 로 생길이야. 나오 냠벨로치 통에만 여대바 인도산에 전제게 다 야말 수산에 짝받기야 준 거리스.
근데 이 산지 좀 된데 거 봐서 산제니 아니 서시저저에서 너무시 뒤지대비 취지 코요니스 전에 술을 땐자 고면에 미만 나지 나도 가서 never 차사래 전에 어디도 송도 자시름 나로리 가서 지지 셴베 지지 사죠 저는 두고 산지는 최대한 받아 로버 주세요 자시름 치기 로선 지지 셴베 춘디 셰버 고 도주네 지지 투베 가서 그냥 동북이 자네리야 자시로 자시득신 멋지 공이야 자시로 로로 신고도 와 라스비어서 말해 스비어 말봐 자시로 가 쳐서 이리 쳐서 고보시베 게 자시득신 실루 주자래 괜히 말을 가지고 숨기 그냥 동북이 자네리야 자시득신 멋지 공을 자시로 로로 신고래스 nga mikse namre ya mikse nabe kudula nga talala ma insari dos pingo ya tajush देशवा बदिया तो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि अरहत क्या है जो हम अरहत की बात करते हैं आखिर वो क्या चीज़ है तो सबसे महत्वपूर्ण या अरहत पद को अगर संक्षेप में समझा जाए तो जो हमारे चित्त की शून्यता ही अरहत पद है अरहत तो है चित्त की शून्यता को हम अरहत पद कह सकते हैं तो इसको प्राप्त करने के लिए अरहत को प्राप्त करने के लिए हमारे जो दो प्रकार के आवरण हैं तो जो कि हमारे कर्म और तथा क्लेश की वजह से उत्पन्न होते हैं ये कर्म और क्लेश की वजह से ही हमें अरहत पद को प्राप्त कराने से एक तरह के अवरोधक बनते हैं तो इनको काटना चाहिए इनको नकारना चाहिए अगर हम शून्यता को नहीं समझते हैं तो हम भवचक्र में पड़े रहते हैं बिना शून्यता को समझे हम भवचक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं अगर हम भवचक्र मुक्त हो जाएंगे अर्थात हम बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे तो हमें शून्यता को समझना होगा अर्थात अपने जो चित्त की प्रकृति है उसकी जो स्वभाव है वो शून्य होना चाहिए तो चित्त की जो शून्यता है वो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होती है हमारे क्लेश की वजह से उत्पन्न होती है हमारे चित्त में इतने प्रकार के जो हमारे चित्त में इतने प्रकार के क्लेश होते हैं कि हम शून्यता के ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं अर्थात हम अज्ञान बने रहते हैं तो ध्यान आदि के द्वारा जो विधि है जो तरीके हैं उनसे हम शून्यता को सही ढंग से समझ सकते हैं अन्य प्रकार के जो उपाय हैं उनके द्वारा जो चित्त की वास्तविक प्रकृति है उसको हम ठीक से समझ सकते हैं तो जो हमारे अरहत पद का मतलब जो चित्त की शून्यता है उसको ठीक से समझने की कोशिश करना चाहिए तो चित्त के अगर हम क्लेश से अगर मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो चित्त के क्लेश से मुक्त हो जाता है अरहत कहलाता है अर्थात अरहत पद को प्राप्त हो जाता है जैसा कि कहा गया है कि जो हमारी अज्ञानता की मूल जड़ हमारे क्लेश की या भवचक्र की मूल जो जड़ है वो अज्ञानता है उसे काटना चाहिए तो इस जो हमारी अज्ञानता है दो प्रकार की बन जाती है एक तो हम शून्यता को नहीं समझ पाते हैं वो अज्ञानता और दूसरे जो कर्म फल है उसके इन चीज़ों को नहीं समझ पाने की अज्ञानता इन दोनों प्रकार की जो अज्ञानता है उनको नष्ट करना चाहिए काटना चाहिए तो अरहत पद की प्राप्ति के उपाय जो है तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम निरात्म की भावना अर्थात निरात्म की सोच को जागृत करें उसको समझें तो इसी प्रकार से हम चावाशेरम में भी कहा गया है कि किस प्रकार से हमारे जो अज्ञानता है उसको काटा जा सकता है शून्यता को किस प्रकार से समझा जा सकता है और बिना हम शून्यता को समझे बिना हमने अब चित्त की जो वास्तविक स्थिति है अर्थात चित्त की जो स्वभाव शून्य है बिना समझे हम अरहत पद को प्राप्त नहीं कर सकते 다유 모인 유명인줄 더기 유명 민주시 시보다는 더다 개발하는 딱 봤어야 돼. 전에 어다 나라도 로리야다 통화만의 관체 나 서디베 시후대 나 링이 여대로 로치도 와. 근데 좀더 따네. 진짜게 나베 로리야 지 링이 샤대야데 베 예베 주지了 아니 풍불에 전선도 다 열었는데 조용히 열어 봐. 상로 대우를 차야지.
딘데게 다 야마스 전에 아니 마테오 차야지 집어넣는 저저 짜스 캐바라는 짜고 세스 삼루 요 스tam이나 아니 레던 요몬 세베 타르스 아니 레 나사라 그게 수연데 게 요몬 매버차 아니 자원에 레 사도 소야게 요몬 매버차인데 레 사도 소야 매버차 딘데지 아니 내가라 아니 요몬 매버차인데 자네 아니 타바레스 어느 타바 컨트스트 보레스 라바이나 레던 요몬 남도레스 시보 코에 겨워디 코어 편지기 레지 중레스 레디 요몬레 중레스 요몬디 취미지기 남도레 중레스 레던 요몬 남도레스 취미지기 남도레 중 가서 쉬어야 돼 아다 천리고 되게 자저 구스타바스 남도 줬다버레스 송샤다 찍고 차대도 와 레던 요몬디 취미지기 남도레 중레스 취미지기 남도데 근데 중어스럽나 템버 메신도 템버 조타니 제대로 템버 짐베 아니 덴징기 트러블에 중어레스 또 스나도 냠뇨 삼스담베네 베나 합칼이야 지기 베나 소소베 마가세 자지기 그 지금 소소 떨었던 게 있으려나 이 마셔서지 야 소소 가보여서 년지기 지금 그 지금 소소 두고 지기서나 이 맞춰서 용도가 이 삼는 나라 지금 요매베 지금 딱배 나올 셔도가 그 취미 남도 좋다니 년디 배 상부배 요매버지 자디 배 냐바 요매버지 롤이야 지금 여기 있잖아요 롤 멋을 챙도 대용야기 싫고 아세게 집으시고싶어도 자 스런데 미가와 빼쁘게 미두고 지배 아세게 집으시 롤레도 년스럼 이동 야 아테게 집으시레도 지사브샤르샤 다 된대기 자다 년 자년 지세 다 디디 민장 따요 잠레 선사무스타요 보이나 그게 자스럽네 빼쁘게 라고 주서 입에서 그렇지 년스럽네 빼 시부지가 초토로 현대 자다니 술을 뜨냐 자다니 지세 마셔야 돼 누구도 매대로 지금 rolls 레인도잖아 배 다다 아니 셴 자니 사지를 지기 배 축도 지금 rol이야 시부대 예버 때니 되는 주민식 남도고 도대가 여버디 직 rol이야 아니 샤이도잖아 타고 다도 좋다셔 로디기 녀모디디기 로시 녀모지야를 싫으시기 어때 사르샤르샤 진득이 다 랑와 숙두버디 야마리 때네 딱섬레 삼바지 자연유산에 되게 글로 빼 탐정이 놓고 지금 쏙쏙 차지 로데야지 땡데도 와 내가 돈이 또 있으기매다 돈이 또 있으기매데 동번이 따와리야 가라 강성보다 심단이 오르 차지 그다 지금 땡중그 대코는 있었는데 지금 sem려야 펼시시 차야를 시다 지금 따서 땡중그 따와 상무시 담배이나 지금 상무시 차나 찬섭니네 지금 나온데 이디 지금 되는 주거지 로를 실기여는데 다 샤워다도 매 삼을 로를 폐지 샤임으로 디 쉬우지 편도 이거 소리도 녀몽게 마셔놓고 녀몽 남산 진리게 다 따요 고와 차가 되게 남산 요 매바도 수고야 말때 녀몽게 마셔놓고는 쉬우지 숙적이 이거 소리도 와 딴데 편도도 그래서 왔다 들이 캐발란에 잡고 세한테 동원이 있을도 땡중게 대코는 있을 전에 쓰면다 맞는 다 라와자서 해야 봐 지금 녀몽세하고 뒤 다더부도 도부 당해지래 코 매바 소토야 이거 지금 로를 샤이는데 쪼발래야 뽑발래야 지금 쉬우셨으면 아니 이 존나슬레도 라 사발래야지 어디들 캐발은 잡았어 तो श्लोक नंबर 28 में
कि जो कि मैं की भावना अर्थात अहंकार की भावना हमारे अंदर, अहम की भावना अथवा आत्मा की जो भावना है वो हमारे अंदर बहुत ही जटिल है। उसे काटना चाहिए, समझना चाहिए कि वो उसका अस्तित्व किस प्रकार से है और किस प्रकार से नहीं है। कर्म और क्लेश के जो नष्ट होने के बाद ही हम अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा स्पष्ट है कि बिना कर्म और क्लेश को रोके हम चाहे कि अरहत पद को प्राप्त कर लें, बुद्धत्व प्राप्त कर लें, तो असंभव है। तो कर्म अज्ञानता की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। तो कर्म अज्ञानता की वजह से होते हैं, फिर अज्ञानता होने की वजह से, और ये अज्ञानता हमारी क्लेश और जितने प्रकार के भी अकुशल कर्म होते हैं हमारे क्लेश की वजह होते हैं। तो क्लेश और की वजह से अज्ञानता की वजह से क्लेश उत्पन्न होते हैं, उसकी वजह से फिर कर्म होते रहते हैं। तो ये हमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बाधक होते हैं। तो असत्यता को सत्यता ये अक्सर इसलिए होता है, हम आत्मा की जो भावना है या मैं की भावना है इसलिए हमारे अंदर जटिल होती है, क्योंकि हम असत्यता को सत्यता मानकर बैठ जाते हैं और उससे फिर क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। किसी चीज़ को हमने मान लेते हैं कि ये सत्य है, अर्थात इसका जो अस्तित्व है इसी रूप में है, और धीरे धीरे हमारे अंदर क्लेश है अर्थात दुर्विचार उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अनुभव के अनुसार अगर मैं कहूँ कि अगर अनुभव के अनुसार कहा जाए कि कोई शत्रु है अर्थात मित्र है, तो उनका आखिर अस्तित्व क्या है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारी कोई दुश्मन है, वो हमारी अगर कोई तारीफ़ करता है तो हम एकदम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो भी हमारी तारीफ़ कर सकता है, या कोई हमारा नज़दीकी है या फिर परिवार का कोई बुराई करता है तब भी हमें ऐसा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी बुराई कर रहा है, क्योंकि हमने पहले से अपने अंदर इस प्रकार की एक जटिल भावना बना के रखी है, ऐसा आरोपित करके रख लिया है कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ऐसा कभी बोल नहीं सकता अर्थात कह नहीं सकता। तथा मित्र तथा शत्रु जो सिर्फ ये नाम दिए गए हैं, केवल हमने आरोपित किया है कि फलां हमारा मित्र है अर्थात ये हमारा जो शत्रु है, सिर्फ हमने आरोपित किए हैं, ये अपने तरफ से अस्तित्व में नहीं है। इसी प्रकार से जो मैं की भावना है अर्थात आत्मा की भावना है वो भी एक तरह के आरोपित की गई है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और ये जटिल हो जाने की वजह से ही हमारे बहुत सारी जो भी हमारी समस्याएं या परेशानियां हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मुझे शून्यता का ज्ञान है अर्थात मैंने शून्यता को प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी इतने सालों के अभ्यास के बाद शून्यता का रूप किस प्रकार से है उसको मैंने समझने की कोशिश की है। तो खासकर जो प्रतीत समुत्पात इत्यादि के द्वारा जो शून्यता का रूप क्या है अर्थात शून्यता क्या है उसको समझने की मैंने कोशिश की है। बिना प्रतीत समुत्पात को समझे शून्यता को ठीक से नहीं समझा जा सकता। इसलिए जब भी मैं शून्यता इत्यादि के बारे में सोचता हूँ तो तुरंत मेरे अंदर उसके रूप या उसकी जो तरीका है वो हमारे अंदर तुरंत जागृत हो जाता है और ठीक तरह से मैं समझ पाता हूँ, और प्रतीत समुत्पात इत्यादि का जो नियम किस प्रकार से कार्य करता है हमारे अंदर तुरंत वो जागृत हो जाता है, ऐसा समझ सकता हूँ। तो इससे क्लेश जो है उनको नष्ट करने में मदद मिलती है। हमारे अंदर जितने प्रकार की जो बुराइयां हैं वो ना आ पाएँ, इसलिए ये शून्यता इत्यादि का अभ्यास करने से हमको मदद मिलती है। तो इसलिए इन बातों का अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम मुक्ति चाहते हैं अर्थात इससे दूर होना चाहते हैं, विरक्त होना चाहते हैं, तो उससे हमको लाभ हो सकता है। तो उक्त बातों को केवल जितने भी ये शून्यता के बारे में अर्थात हमारे जो क्लेश किस प्रकार से काम करते हैं उनके बारे में सोचने भर से ही तुरंत हमारे अंदर ये भावना जागृत हो जाती है अर्थात सोच उत्पन्न हो जाती है कि प्रतीत समुत्पात का और शून्यता का जो नियम है वो हमारे क्लेशों को अर्थात हमारी जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करने में किस प्रकार से कारगर साबित होता है। 다들 네, 다유 덕이 여자봐 니는 담배 던도 로 만주 로라 지금 사바치기 지금 풍부 아니 풍부가라 왕 주겐 더부지기
nga sa lo ji sha mu do wa ta rang de na le san je be da da min de gen na le yin na ya ani ta san je be du do ma wa ta ka re chira ma be da de ba chi ke ani da sa da me sa ji do so 그게 로로 멋으로 쳤네 저도 매배 다 사실 세기야래 다 대마도 신 낭배 두도마와 용서로기 다음에 다와지 누기야래 디 다음에 찌를 쳐배 다음에 다와디 좀더 시간로다 되대 다음에 다왔어야지 아니 강사 랑제 투베 재수 투베 다음에 봐实际上呢왕 주로보 풍불로 때밤에 봐 양가를 지기야 되겠지 든지겠다 다 면접을 해. 든지기 다음에서 직시해요. 세상가 정안한 줄로리야 캐바도가 나이 루 나이 셈슬라바이나 something like say my body my mind. It is correct. So we can say that. So beside my body, my mind, where is I? Now the concept of soul is something independent, separate. So that all Buddhist different school of thought, mainly four school of thought, you see, does not accept that. Within different school of thought, within Buddhism, Buddhist school of thought, the common sort of, the concept of selflessness is something only. Tagi understood that lungdigi kasa dajawa dugisim, then tower giveaway, and 두지 풍부 뒤동데 텔라다네 여마인 신 디슈데 오나 다 매버려서는 다 매버 말이스 빼나 지들이야나 손나라 때니 신도 접어 딸 대신 풍부남 때네 그저 심지 접어인 사도 되기 풍부를 때네 딱셔시레스 풍부를 양거도 다야 말이스 어디 지송 तो जैसा कि पहले कहा गया कि आत्मा का रूप किस प्रकार था, आत्मा किस प्रकार से अस्तित्व में है, हमारे पांचों स्कंदों से मिलकर पांचों स्कंदों पर निर्भर होकर के एक आत्मा का नाम दिया गया है, ना कि कोई उसकी स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए अगर हम समझें कि इस रूप में अगर समझें कि आत्मा है तो हम समझ सकते हैं कि ये हमारे जो पांच स्कंध हैं इस पर निर्भर होकर के वो उत्पन्न होती है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस रूप में हमें आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 단전에기 풍불의 전신도 다 요말인데 풍불 왕주긴 게다 저도 미다의人心 实际上 풍부도 청이 튼배 다 랑자와 징의 걸로 탄지지 예버래 다 딘데기 신유 다디 매바디 다 다음에 두노 시샤로고 지혀려던 되대베 강사가 다음에 써야 돼 딘지 차비야 다 드는데 당신 대 아니 다 좀더 마와 멍구찌기 다 산제베로 마 멍구찌기 딘데기 다도 짐베 아니 당신 강사가 당신 대 아니 시보 콜로 코야기 녀몽가 자데 디치기라래 대대비 아니 강사가 당신 대 방법이나 아니 녀몽 도도래 세수나치라래 다데 공부루루기 샴데 치시 풍부를 진여바 티시텔라 난진여 난진여나 양래데 레레자니 껴와이 사게다 숨디기 다 풍부 때문에 진베 댄진 더 투버시 뭐주나 다 풍부 때문에 댄진 참무 쳐기 다 풍부 때문에 댄진 레다 뭔고 연구리데 야 차라 연구리데 이내다 간다 풍부 때문에 진베 댄진 더 버시 뭐주나 풍부를 때는 다 대버스베 댄진디 자원의 파 순충 투야 연구 말이 있다 지송을
풍부 때문에 집에 댄징이 신이 숨어 숨어 풍부를 때는 답에 다또 짐에 댄징이 신이 순충 두고 말해 어다 되게 강사가 던진 그 싸워도 취이 던진 거 치고래 딱 금들 취어다 강사서 이와 취해야 돼 롱저버 다 강사 롱제제 풍소 두스니체 다 다음이 시행되잖아요 롱저버 다 다음에 다 다음이지 롱제제 풍소 다도 모두 다음이지 니션 강사가 때문에 취하면 니시도 다들 최이다면 시행기 semsabada umob니 다 최이다면 숨겨 다민이 시행 다 다민이 시에 안데 되는 데부터 가서 그래 그게 semsab에다 다르셔 강사가 등진 대 녀목지기 요래 대 뽕야 대 강사가 다민 좀 검네 아니 녀목 세트 그래스 지송도가 다 공부르고 셔버 투모 모임부터 이르잖아요 안데 되게 샤마타고는 신기 풍부 댄지 마도고도 강사 댄지 도고 말이시는 소윤도 최이 다음에 또 두버지 뭐죠나 아니 강사가 다음에 저버 또 두고 말이시 너나 강사가 다음에 최이 다음에 써야지 동시学生은 뭐네 다음에 셔버 마도 각종 올 켜버려 말이시 모니지 주베 다 각자테 풍부 댄도 아니 여번 좀버데 강사가 댄 강사가 댄도 여번 좀버데 강사가 댄지 풍부전도 여번 좀버데 최이던지 자 대인년부터 강사 모니 두번 해봐 토등에 다가는 신기 풍부대모 풍부 가져다 모니지 뭐주고 떡배 어다 다민이 떡배 시럽되기 당신이부터 녀부치그리 디송도가 저도 안다디 식디나 같이 치지 풍부전 여버 지들랑 간지요 간지요는 양는데 레레잖아 겨워니 사지 तो बौद्ध धर्म के जो हमारे 4 स्कूल हैं 4 सिद्धांत के स्कूल हैं वो सारे के सारे इस बात को मानते हैं कि मनुष्य जो अर्थात पुद्गल निरात्म और जो धर्म निरात्म दोनों होती हैं तो पुद्गल निरात्म ही अर्थात जो मनुष्य की आत्मा कही है उनको ये ही हमें भवचक्र में रोक के रखती है इसको अगर हम काट सकते हैं तो हम भवचक्र से मुक्त हो जाएंगे और पुद्गल निरात्म धर्म निरात्म ये दोनों ही इस प्रकार की जो आत्म रूपी रूप हैं जो कि हम लोगों को अर्थात मनुष्य को इसमें बांधे रखते हैं तो खासकर जो चित्रमात्र और माध्यमिक दर्शन स्कूल के जो विद्वान लोग हैं वो धर्म निरात्म को ज़्यादा महत्व देते हैं अर्थात उसको मानते हैं तो पुद्गल निरात्म अर्थात पुरुष निरात्म को काटे बिना हम धर्म निरात्म को नहीं समझ सकते हैं इसी प्रकार से अगर हम पूर्ण रूप से इस पुद्गल निरात्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो धर्म निरात्म को अच्छी तरह से समझना चाहिए इसे काटना चाहिए बिना इन दोनों प्रकार के जो हमारे निरात्म हैं उन समझे बिना हम भवचक्र से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं तो ये दोनों प्रकार की जो निरात्म हैं वो हमारे जो वस्तुओं के स्कंद हैं अर्थात हमारे चाहे हमारी पुद्गल निरात्म हो वो हमारे इन 5 स्कंदों पर निर्भर होने के वजह से ही अस्तित्व में आती है अगर इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता देखने को मिले तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे ऊपर से या अलग कोई हटके इनसे हो या अलग कोई स्वतंत्र उसकी सत्ता हो तो ऐसा देखने में नहीं आता है अर्थात उससे देखा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका अगर कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो तो इनसे हमारे 5 स्कंद से हटकर दिखाई पड़ता लेकिन ऐसा नहीं होता 다들 뭐 쇼로가 카셰 뭐 친디 샴데 디스도가 디슈다 그러셔 람숨 통다 의매바 과외 전공 개매이经过的 편수지 규정되는 과학으로 되는 랑셰니가 더 주숨이도 마톱치 난지반에 세바죠 되네 레다 깨와야 대저 군대 깨와당 대자 세바 니도나 양다니도 지된라 유민이도 미심소스 전 어디 되게 던데 양라 주니 세네 시보콜로 창아바세는 좀 된데 렁이기다 시셔서도 셰고 난체 졸라 관계 아니 곰졸이야 시보콜로 창아바 티스
어다 되기 유절이야 디스토가 저기 파제 디무천지 파제 아니 되자천지 차제 아니 전에 시단천지 주유제 디숨지 도가 디 아니 직한에 직편대 버지 다 중나 조조디 디무 파게 칸에 아니 시단천배 주다 아니 되자천배 잔자로 막 편대 버지 야 디니부디 칸에 야 파만 제등해지기 드니 구요래 가다 디무 파 천배 디무 댄징기 차단이게 양 차단이게 양 디무 댄징 양 무튼 파야 폐요야지 어다데 유모 도숨 천지체 달라데네 디치데 아니 디스토가 양 고고지리야 치가 나오다 치가 까보지 디 누지래 아니 까르보디 선엄 걸래 대도 편지기다 선엄도 미유래 나보디 년도 편지 미 가서 선엄 모임벨래 다 디타데 단조 년조 디디 다 달라지 주다 되는마 아니 가라지기 냐와이다 tunduchene 디디 거다 제대비 아니 데 뇽몰레 레카나니 뇽모 독숨레 레카나니 시복 편지기 델레 아니 시버 지기네 단종년도 편대야디 디 필로 그래서나 디탈이야 아니 점이 가서 주니체네 아니 머리 겸 로마데스 겸 로마지 지도와 디 머리고 참바래 되는 누지단에 자간신 사디 누지 니버 누지래 사디 총기하래 다 도우세네 간다에네 다 점지도 이게 정금도 간다에네 머리고 누지 남시 주도스 아니 남시 민수 아니 계시 럭바 소와 세바 람바 세바 아니 겨와 거시세네 양라 중이 시행도가 저자 와다 되기 코쿠스 시행이하래 때는 양라 중이 머리반에 누지는 남시세네 막 롱중기 코쿠스 시 머리반가나 누지가나 남신가 세네 디 남시 시점부터 시고 말이 레 사베 레 산, 레 각베 네고기 셰바질 샤네 규두기 남시스 규 딱하다 레 기신이 버고 식루고 봐. 레 식비 식복거세 남시디 규두기 남시체 되네 식베 누버디 셀랭 쇠땀니 야 시베 땐지 차니 디 겨원 주인들산에 아니 제두기 남시신 샤샤 되래 사진에 인도산에 머리관에 챤도 거시버도 아니 nga마 여나 치모치모도 용댕에 nga마 가나 치모치모 가줘야지 그래서 롱주고관에 코코스 루도고관에 냥대 토주디 또 송도가 이 좀되더란 게 셔서보시는 샤고 난체 또 스트레스 송도가 아주 졸라한 거 검정와리야 세보고로 창가봤어야 돼 내가 첨부르셔 다 이내는 아주 세보고로 지르잖아요 애들 서울에서 가르쳐 있나 앤디 미다고 소야도 신부 지고르다 미 신부디 예식 장시다가 퇴가문 가시다가 배지 다 지금 거 보고 차도 쳐버지도 센스들어서지 뒤도 논주리샤 뭐래잖아 신부 진짜 지금 직수 미두고로 지기다 어떤지 지기다 지주래 냐마도 로망고 공을 배지 지르지도 그 조준한다 네 삼자셰이 디 메다고 충분히하래 메다고 쳐야돼 나도 들게서 배 저불이 영자라 디 가서 그게 낑르치는 메다고 충분도가 로강도 로가 내가 있어도 낑르치식도가 좋아요 그 메다고 충분도가 제가 진짜 인데 낑르치치 에 태감도 이 시장에다 계속해 엄마다 낑르치치 이 낑르치도 심도 비슷하나 디 배지 메다고 쳐야돼 배지 내라면서 선서로야 저장ኛ망에디 삼자시니 직 지요래 에시고 단디
달라라면 나면 사주 시기 세면로 아니 이제 나오지 기분도 제가 가다 실로 심부스로 다 지금 초로 동안 저강 가서 이제 논주리 이식 전에도 논주리 자 간다다 디기도 심대하디 미다고 숨겨야래 제가 시고 뉴몬배 상황겠다 단 뉴몬배 상황 사람이 말이 배 균제 그经济 집에 최 상황으로 계지계지 직배더니 미다고래 전에 어디 뒤충겨야래 다 이게 다데 답자시도가 나와지 뒤 타로 충겨야래 에 아주 저분이 타니 이게 답자가 안 되는 타와도 계속 말다 다 타바 처음 잠래 제니 대 점된데 그것이 뒤 나와들어도 청소 때 되지 아니 어디 식재죠 가서 식재도 가서 사바시 용어죠 아니 덤비주는 아주 시다되는 셔버자 간시로도 봐요 준들을 깨고로 동현 탐을 제가 줄서야게 어떤 소다는 되시고도 되고도가 어떤 식재 티제 어디 좀 되는 거 가거래 특히 계시면도 와 다와 진짜게 양아 중이 뒤 안데 대수야 되리샤 람송 토다 의매복 코에经过 개미经过的 편준지 유진되는 코와 줄서네 땡땡 가만가면 치무치무 깨야 다 독세네 로데야 숨겨야 진짜게 다 자와 있는 머리버디 다 머리버디 때내라 중이 그 통매 머리버디 대코난지로 몸에 머리고 와서 안 때리 균제로 몸에 머리버디 순한 모임 bel라사야 지도와 다 선한 걸 내다 미외 내사야지 대코난지로 몸에 머리고 자유야 래 그래서 드네 인도산에 다 대코난지로 몸에 머리고 돼 애니 점바이나 봐 애니 가다 애니 지 텐들 하마지도 가두고 요레스 진짜게다 대코난지로 몸에 머리고 돼 둬야 돼 대코난지 인수 셰고 요레스 진짜지 테네 랑셴니가다 주숨이도 마톱칠 넌지반의 사버주 테네 레다 겨와요 테르 준데 겨와다 테다 사버 니 통나 양단이도 지된로 유명이도 미심소 제니 어라 되게 자시고 세 레다 녀모 사버 타르 레다 녀모 남도 레다 저래 저번 동번 니 통가 가지고 사가다 치기 엔 따다래 이거도 와 어디 들으셔 श्लोक नंबर 36 से तो इसके बाद में ज़्यादातर प्रति समुद्पाद के जो 12 निदान हैं जो कड़ियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है और आप जब जो बुद्ध विहार इत्यादि के सामने जो भवचक्र होता है भवचक्र का एक चित्र बना हुआ है अर्थात जीवन चक्र एक बना हुआ है उसको आप ढंग से देखें तो उसके बीच में तीन जीवों को दर्शाया गया हुआ है उसमें सुअर चील या फिर जो सांप है उनको 3 अलग अलग जीवों को दर्शाया गया है और अलग अलग उनके महत्व हैं जैसे कि सांप इसमें गुस्से का प्रतीक है इसी प्रकार से जो सुअर आलस्य आदि का प्रतीक है तो ये और उस जीवन चक्र को देखें तो आधा सफ़ेद और आधा अन्य दूसरा कलर साथ काला है या फिर अन्य कलर है तो ये जो सफ़ेद कलर ये दर्शाता है कि जो पुण्य संभार करने के बाद किस प्रकार से इन जीवों को या जो पुण्य संभार करने के बाद किस प्रकार से लाभ होता है वो इस भव चक्र में अर्थात जीवन चक्र में दर्शाए गए हैं और इसके बाद भी इस जीवन चक्र में अन्य जो लोक हैं जो 6 लोक हैं उनको भी क्रम से दर्शाया गया है तो ये अज्ञानता की वजह से हम किस प्रकार से हम अकुशल कर्म करते हैं और कर्म आदि करते रहते हैं इन चीज़ों को भी वहाँ पर इस चक्र में देखने को मिल सकता है तो ये इस जीवन चक्र के जो चक्र है वो दिखाने का मतलब ये है कि प्रति समुद्पाद के जो 12 निदान हैं 12 कड़ियाँ हैं वो किस प्रकार से जीव उत्पन्न होती हैं तो इसका जो प्रति समुद्पाद के जो कड़ियाँ सबसे पहले अज्ञानता से शुरू होकर के अंत में जो मृत्यु को प्राप्त होता है इसको पूरे भवचक्र रूप में दिखाया गया कि इस प्रकार से हमारा जीवन चलता रहता है तो ये जो जीवन चक्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका बहुत ही अपना एक महत्व होता है इसे समझने की कोशिश करना चाहिए तो
कुछ लोग इसको इस रूप में भी समझते हैं कि ये अनित्यता को दर्शाता है। अनित्यता का मतलब कि हर एक चीज़ जो क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील होती रहती है। तो उस भव चक्र से अर्थात जीवन चक्र से ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से अनित्यता अर्थात किस प्रकार से एक एक चीज़ परिवर्तित होती रहती है और एक कड़ी से दूसरी कड़ी में परिवर्तित हो जाती है। तो इस रूप में भी समझा जा सकता है। तो मैंने 1960 के आसपास एक सलाह दी थी कि अगर ये चीज़ हमें अनित्यता को दर्शाती है तो क्यों नहीं जो नर कंगाल है उसको दिखाना चाहिए, उससे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कि किस प्रकार से अनित्यता होती है, अर्थात सारी की सारी चीज़ें कैसे नष्ट हो जाती हैं। फिर शायद लोग ऐसा सोच सकते थे कहीं ऐसा तो नहीं परम पावन जी का अपना एक नया आविष्कार हो, तो फिर उसको ऐसा ही छोड़ दिया गया। इसमें एक और चीज़ है जो चाँद को भी दर्शाया गया है। जो चाँद अर्थात चंद्रमा है वो अर्हत पद को दर्शाता है कि जिस तरह से कि चाँद स्वच्छ होता है उसी प्रकार से अर्हत पद का भी जो अर्हत पद होता है वो भी स्वच्छ होता है, अर्थात क्लेशों से मुक्त हुई अवस्था को अर्हत पद कहा जाता है। तो वो भी इस जीवन चक्र में दर्शाया गया है। अर्थात शून्यता की जो अज्ञानता है, जो हम शून्यता को नहीं समझ पाते हैं, इस वजह की जो अज्ञानता हमारे अंदर है उसको नष्ट करने में ये लाभदायक है और उससे समझा जा सकता है कि किस प्रकार से हम अज्ञानता की वजह से शून्यता को नहीं समझ सकते हैं या नहीं समझ पाते हैं और बार बार पुनः इस जीवन चक्र के जो चक्र हैं, जो प्रतिसमुत्पाद के अनुसार 12 निदान हैं, इसमें पड़े रहते हैं। तो ये चक्र इस चीज़ को भी दर्शाता है। तो अक्सर ये आप कहीं भी देखिए, चाहे कोई बुद्ध विहार है, इसके सामने ये क्या जीवन चक्र हमेशा बना रहता है। इससे समझा जा सके कि हमारा जो अनित्यता का जो सिद्धांत है अर्थात प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत है, अनित्यता का सिद्धांत प्रतिसमुत्पाद पर आधारित होकर के किस प्रकार के कार्य करता है उसको समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। 다들 샴도마 디스토가 도나 매버 따와니 레지드부 메제고 수나무이 녀송와 되는 로버다 시셰 도나 여버 따와니 레지드부 여제고 수남된도 주든바 양다 따와 시셰 도 시베 매던 유시칠 디도 수남 랜다바 대인년도 단도래 되는 타바 담배 셰 세네다 준제기 땡중로 먹네 아니 제 에네 준제기 남샤 저 미시나 에네 수나마 이벨라사 니가 요리스 년롤기야 요리스 다 준제를 몽베 랜저를 몽베 파 가소리 그게 미시버드 파 세니 띵 준제기 땡중 셰바 쌈게 야 교던 제비처라 아택 집어디 도토고 말이스 근데 이제는 세버 코알로 코야 그 지그레스 자자가다 저 드네 인도다 뭐라 준제기 땡중 셰바 챤니 아니 디군 기주고 람람람니 뭔도 타바르 챤 대네 대코나니 넘고 머리고 인연보 땡중 그 대코나니 디 셰바 챤니 아니 대ቋ음데 아니 봐 너무 탐색이 인연보 챤니 아니 탈벽고 봐 톡고야 저거레스 저들이 인도산에 산지 좀 된 얘기 다 땡중고 따와서도 쉬우지 개셔버리셔 스안데 군제기 땡중 나 때는다고 땡중 니 챤니 뭔도 주야다 내려 주야디 로베 까말을 실에 차신 대변하는 세브쇼 송샤 세브쇼도 돼 챤니 어디르셔 이거는 내가 도와 챤니 어디 대대비 거네 메타와디 애니 냥송도 그래스 여다디 애니 시보 코알로 통야 지그레스 진짜 인도 탄이 세베 다 탄이 소스네면도 반다이니 땡주고 대관하니 수신도 셰바이나 애니 때는 중앙 사드 시인도산에 탄예베 남샤디디 배드 그 가서 우리 그게 세명에 번이 돼야지 세명 두고 줘야지
다 들어야 타녀도 작세대 요구 말해. 봐. 그는 로도도 제디에 그 로도 그 지금 현단으로 그냥 로코랑 뭐라 자대로 소리를 받아. 근데 이제는 타녀도 자고 섬지면 쇼고. 타녀도 자고. 타녀도 자고 된들라 타녀에 참으신기 민으바. 이 세력에 시야다라셔. 미치기 딱제 전이 그 네번네번 점라 너도 차셔면도 와. 야 미신식이 야 딱제체. 다디 지단 저 가서 배는 지당 식샤베이나 투나로지. 녀미도 투나도 주댕에 shum보이네. 아니 이물 다 적도가. 세상하다 간주兄弟 다르셔. 지 예의 메시지 참에 민문이 그전에. 참에 주고 예배 천이 시주고 천이 있는 송구도가 참에 주고 거와. 참에 주스를 전에 된데기다 랑 그래서 런지 똑베 로데긴 진줄라 로 생기 민으버지 참아 생기 민으버서야지 타냐도 잡아이마 다른 타냐에 참아 생기 민으버 다 좋대셔 다 좀데 딱베 지 좀데 따도 전에 예배 루스 전에 샤베 내주주체 타냐 주식을 르 민으나야 다 전담 주식이 리베 넣는 거야 봐 그래서 네 인도 전에 타냐도 예매해야 돼 전세 숨쉬기도가 타냐도 잡아이마 달라 타냐에 참아신지 민어봐 전남 주지지 리베자 민어봐 디스ung구 때문에 아니 타냐도 예버시기도가 타냐도 예버셔야 돼 조지기 때문에 타냐도 예버 조조를 마도 유코랑의 뭐네 유미기 시야도 말와 배나 탁저 주주 짐베 로티다 주기 풍불로 주주 짐베 로라 로니가 로라 탁제 때문에 주 매번 넣으시 주기 풍부 때문에 주 주요 말해 매번 단절해 레디 탁제 땡라 주신 다셔버디 딱베 다니 차的原来야 타녀에 참아 생기 내용으로 와 미현식이 되는 뒤주말에 탁관에서 시행을 봐 소수인의 따져를 시대체 소소 시대에 있는 탁점이 시행으로 봐 사망감에 뒤주도 삼 전대 사망감은 롱감에 뒤주도 삼 전대인데 로 제만되게 내용도 와 타녀에 참아 생기 내용도 와 자상가 나를 탁절을 주주집에 로 대응을 주 자대에 소비시래디 될 타녀에 참아 생기 내용으로 봐 다 풍부 때문에 주요 말에디 풍부 때문에 주 따셔버더라 타녀에 참아시 누구면도 봐. 자상가 유기문에 뭐주고 단절해디 이내 타녀도 자괴 타녀에 르네 만나기 때문에 다 예미셔야고. 자 디네 인도산에 유진 로이 왕기 예미셔야 마도 유기문에 오브젝티브를 주고 떼내요 말이야. 디시해요. 다시 시작해야 돼. 나는 되게 공도 시사를 딱 나는 로리야. 저기 책 가다 가인에 된정근에 여버시 나왔다도 셴 텔레되는 취미 이 남도 괜히 차단 깨야 들어 봐. 다 들어야 낭색이 강사 랑저트베 강사 랑저트베다 제수 주번 짐베 된데기다 가도 다도 짐버 라고 대 장배 묘모 리직 등지 참여 장배 묘목 리직 니무도 와. 때 계신 버리셔. 자다가 등지 라과 장배 묘목라 등지 라과 객배 다음에 라과 떡배 로티기 리시 문제 원고는 거지. 디 자원에 바 꽂혀야 양야 말이야. 가려서는 묘목 타다 띠무 등지를 때는 용되게 알아. 자, 드레 이번 인도산 다데 오늘 드레 이번 인도산에 간다 다음에 참 떠네. 디니 덴지 참을 야쁘게다. 다음에 참 떠네. 덴지 참을 야쁘게 너바 채퇴할지기 덴지기다 다음에 지 곰니 덴지 참을 넣는데 대파 가요나 덴지라고 디디 정식 가져야 돼. 디는 내가 전부도 와. 저상가 땡주그 대권에 있어야 돼. 다 돈이 참을 차죠. 다음에 참을 차죠. 다 디시오. 다들 우메슝의 송원을 사가 지금 누가 섬섬이 주의 다음에 송구열데 가르쳐내는 표현이 시바 땡주도 집에 집을 하되기도 와. 우메베 타녀랑제 타녀도랑제 시겐즈 덴바
즉 캡베 따와지 숨고여르디 이내 그게 최신 지도 나오는 신직이 전쟁원에 예버지 현실도 와. 저상가 미대 식모투 미대 파대기 하. 저도 고물루기 아니 내해서 선도 잡아라 뉴문 동진 지민 중 손데 미대기 미대 자서지기 되게 내서 파바이나 뉴문 디그리스. 자, 드네 미대 타다 시고요. 미대 타다 시야기 다베베 따와 타냐도야 랑제 캡베 따와 때 코너래셔. 다들 사비샤리 또 상당한 시야시도 와. 좋아지 그것도 와. 저 차고로 수도 됐다 전다 되지. 리송아. 와다 동시에는 이니 덴지 처문에 캡어지고 그래스. 어때르샤. तो जब कर्म फल को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो जो हमारा जो पुण्य संभार है उसको भी अर्जित नहीं किया जा सकता है और बिना उसके अर्जित किए हम शून्यता इत्यादि को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। अतः अगर हम पुण्य को जो संचय नहीं कर पाएंगे तो हम बार बार इस भावचक्र में घूमते रहेंगे और भावचक्र में बने रहने का अर्थात बार बार पुनः आने का क्रम जो हमारा लगातार बना रहेगा। तो क्रम जो कर्म फल के जो समुत्पाद है अर्थात उसका कर्म और फल का किस प्रकार से समुत्पाद अर्थात प्रति समुत्पाद है उसको ठीक से हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सारे के सारे क्लेशों को काट दें, जितने प्रकार के हमारे क्लेश हैं उनको अगर काट सकें तब हम अरहत पद को प्राप्त कर सकते हैं अर्थात हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्ध का जो भगवान बुद्ध ने हमें जो प्रति समुत्पाद का सिद्धांत दिया है, जो नियम दिया है, जिसके 12 निदान दिए हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको ठीक से लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो उक्त बातों को अर्थात उनके जो जीवन चक्र अर्थात 12 प्रकार के निदान हैं और उनके बारे में कमलशील ने भी अपने ग्रंथों में रचना की है कि ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हमारे इस जीवन चक्र के लिए लाभदायक अर्थात किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितनी भी प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो सारी की सारी एक दूसरे पर निर्भर होकर के ही उत्पन्न होती हैं, एक दूसरे पे आधार बनकर ही उत्पन्न होती हैं। कोई भी चीज़ स्वयं से उसकी सत्ता नहीं होती है। तो वैज्ञानिक लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि या उनकी भी ऐसा ही दृष्टिकोण है कि जितनी भी चीज़ें किसी कारण या हेतु की वजह से उत्पन्न हुआ करती हैं अर्थात प्रतिसमुत्पाद के नियम के अनुसार ही कार्य करती हैं। तो ये कोई चीज़ सिद्ध है या नहीं, ये हमारे प्रमाण के आधार पर ही कहा जा सकता है कि अमुक चीज़ ये ठीक है कि नहीं। अगर वो सिद्ध हो जाती है, प्रमाण के द्वारा वो सिद्ध हो जाती है तो उसको सही माना जा सकता है और प्रमाण के द्वारा उसको अगर गलत साबित किया जाए अर्थात गलत साबित हो जाए तो वो गलत हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझा जाए कि कोई अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी हो तो हमारी जो मन की स्थिति है उसे सांप के रूप में समझ बैठती है। तो हालांकि उसको हमने उसके शरीर को समझ कर के सर्प नाम नहीं दिया, बल्कि जो रस्सी थी उसको देख कर के उसको सर्प समझ बैठे हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या धारणा है, वो हमारी बन जाती है क्योंकि हमने इस चीज़ को जानने के लिए जो हमारा ज्ञान है अर्थात प्रज्ञा है उसको ठीक से उपयोग नहीं किया। यहाँ पर हमने प्रमाण का उपयोग ठीक से न कर पाने की वजह से उसका नाम सर्प के रूप में नाम दे दिया। तो उसका नाम सर्प तो दिया है तो उसके शरीर या उसके स्कंद की वजह से न होकर के ये केवल हमारी मिथ्या दृष्टि है उसकी वजह से ये सिद्ध किया हुआ है। तो उक्त प्रकार के जो हमारा जो ज्ञान है वो हमारे प्रमाण रूपी ज्ञान को नुकसान पहुंचाता है अर्थात प्रमाण रूपी जो हमारा ज्ञान है उसको नकारता है। तो अगर उसके मोटे उसके स्कंद के रूप में समझा जाए कि वो सर्प जो रस्सी को सर्प रूप में मान बैठे हैं वो स्कंद उसका है कि नहीं, उसका जो शरीर या रूप स्कंद है कि नहीं, तो उसका रस रूप या जो 5 स्कंद हैं वो उसमें सन्निहित नहीं होते हैं और हमारे जो सिद्धांत है उसको ये नुकसान पहुंचाता है अर्थात हमारी मिथ्या दृष्टि बन जाती है। जैसे हम देखते हैं उसी प्रकार से हम
स्वीकार करते रहते हैं। ये हम सब लोगों की एक प्रकार की आदत होती है, या एक प्रकार का एक जीवन जीने की तरीका ही है कि दिन में जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसको जस का तैस मान लेते हैं, सत्य मान बैठ जाते हैं कि यही सत्य है। उसकी जो वास्तविकता क्या है उसकी सतह पर हम कभी छानबीन नहीं करते, उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं, और उस अपनी जो सोच है उसको ही एकदम सत्य मान करके बैठ जाते हैं। तो जो हमारी निरात्म में भी एक स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में जो निरात्म होते हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम सूक्ष्म निरात्म को नहीं काटेंगे तब तक जो निरात्म का भावना है, चाहे पुद्गल निरात्म या धर्म निरात्म है, उसको हम ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो इन दोनों पुद्गल निरात्म और धर्म निरात्म को नष्ट करने के लिए इसकी जो प्रकृति स्थूल से लेकर के सूक्ष्म होते जाते उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और धीरे धीरे काटने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सूक्ष्म पुद्गल निरात्म और धर्म निर्वात को काटेंगे तभी जाकर के जो स्थूल अर्थात मोटा मोटी रूप में, बड़े रूप में उसके जो रूप होता है उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बिना उसके जो सूक्ष्म रूप है उसको समझे बिना इसको स्थूल रूप को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर हम इन उक्त बातों को जानने की कोशिश करें तो उसके लिए जो माध्यमिक दर्शन आचार्य नागार्जुन नागार्जुन जी द्वारा कहा गया है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि पुद्गल निरात्म और जो हमारा धर्म निरात्म है उनकी जो व्याख्या या विशेषता या फिर उनका जो उन्होंने अपनी ग्रंथों में उनके बारे में बताया, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से इनको स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप की तरफ ले जा करके उसको नष्ट किया जा सकता है, और जो हमारी मिथ्या धारणा बनी हुई है उसको नष्ट किया जा सकता, काटा जा सकता है। 다들 샴들마 셜카지 셜가 카셰마 친지디 샴데 디스토가 디유페는 디중페르 림부여는 통무신 디지페는 디지페르 마미중의 외신으로 림부면은 통원이 랑고 레마인 세네 어다 송샤 디기 뚜주이버드 세브슈송도와 림동세야데 림불로 뜨는 통으로 뜨는 림부샤야 마도 빼는 누구숨 도세이나 누구지마디 림불에 통으로서는 럽샤미도가 도스잖아 긴주로 뜨네 신라데 통우 티중으로 뜨네 림부 림동 여러다 림동 사데 뜨네 샤마도 천미도가 다 뜨바다 마드바 응가르바 풍순세에 응가르바 자 근데 이르잖아요 그 뜨네 주버시 인신절라 딱고 마드베 랑신 매대보고 다 세브샤데 자 근데 이르잖아요 다 뜨바 매바 라왕 주버 매바디 다 의미지 주인 것도가 얘네 야래 야나 마드바 요구래 텔라 너지도가 근데 인도다 얘네 야래 마드바 주버라 너지에 인도잖아요 뜨베 왕게 예바디 의미지 주인 것도가 तो श्लोक नंबर 49 में इसमें कहा गया कि किस प्रकार से परस्पर अस्तित्व में आते हैं। तो उदाहरण दिया गया कि बड़ा तभी कहा जा सकता है जब उसके सापेक्ष छोटा हो, तब छोटा अपने से उसका अस्तित्व नहीं है, बड़े को देखकर वो छोटा हुआ है। जिस प्रकार के हमारी ये 3 उंगली हैं, इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी तभी कहा जा सकता है। अगर छोटी उंगली कहा कि ये छोटी उंगली है तो इस बड़ी उंगली को देखकर ही कहा जा सकता है कि छोटी उंगली है। इसी प्रकार से अगर इस उंगली को कहें कि ये बड़ी उंगली है तो छोटी उंगली को देखकर ही कहा जा सकता है कि ये बड़ी उंगली है। तो इस प्रकार से ये परस्पर ये अस्तित्व में आते हैं, तो एक दूसरे पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में आते हैं। अपने स्वतंत्र सत्ता से वो बड़ा है या छोटा है कह पाना मुश्किल होता है। 다들 디 샴드마 다 셜로가 막 거로즈 마치니 기부섬이 춤이 있어. 기부섬이 춤이 니소. 다 강사가 다음에도 최이 다음에 이부터 송용구야래. 기부섬이 춤이 매매 룸에 나가면 셜로가 그저래. 니마스. 가. 니마스. 가. 알레 게추tumba. 거기 빠르 쳐보지랑 가요나. 거기서 따야지. 맞다. 거기서 따야 들어. 탭 들어. 그 들어. 뒤쇼로가 거죠.
게주 덤바 말다 콘주 따야 탭들어 디난 거죠 디 쇼란 직발에 쇼란 게지 매지 쇼로가 디나 여러베 맞다 럽다 तो आप लोग जिस श्लोक नंबर 80 में देखिए, so you can see in the श्लोक number 80 in this book. श्लोक जिशोजबे वादा दे 기부 사데 가 기부사 남 강사감 기부세다 데 나도 로려야 풍불루유도 샤베거네 나서 로셔도가 풍불루유도 마셔 나차면도 가 자다 나서야데 풍부셉들 여바로 정도 로 샤데 거라 다바 심주셔네 풍부 중심 되버려 중은 되버려 다 자장가 기부사 기부함 강사사야데 아니 중어사이 상감날에 요마레스 충감날에 요마레스 맹감날에 요마 도스네 기부섬이 추모이 메밀루미 난가메 단 남시마이 사디기 샘잠바다 다가다지기 샘잠바 근신등에 있는다 근신민등에기 이지셔바디 천실셔요래 우모보 탄예도랑제 신에기 이지셔바디 디간에 강사셔요. 강사서데 시베 규를 때네 딱버려라. 시베 규기 때문에 강사셔요. 그래서 단 로르부데 남시마이 남시 디기 때문에 남시 나이 셈르와. 나이 더기 송야지 레마도 나도 말했어. 또가 개지 이시디 나이나 애니 이시 공회 시본 것도 집에 내고 이시 찍도가. 디 샤바이나 공회 시본 것도 뭐 집에 내고 올라 나도 샤식 말와. 다 이루 밀음 거 내고 올라 공회 시본 요 말이 다 이루 뒤도 있는 나대야 메라 샤고 쳐서. 다 이루 라바데 바 가체 배 개데 내고 올라 나 개샤스 럽식 말와. 나대 이루도 나를 샤바이나 이루디 가데요래. 에네 나대 메누가 다 타르도는 님을 해지 집에 왜서 가는 섬던 줄이 왜서다가 나래슬라나 아니 왜서데 왜서가 왜서 차르세야디 샤트합니다. 자들이 인도산에 시베 때는 나샤네 대부천에요 말에 다 열이야나 님을 해지 집에 왜서 가는 섬다래 다 뒤에 나를 샤나 대부천도 자들이 인도산에 남심마이 그메나슬라니 아니 서주멜로 나가 남시 디디 뒤점때 나르베스르네 용신 말레스 봐. 자, 진짜 이르잖아. 텔레샤나 기부강스. 풍부가 레 로스에 강산이야 용 말레스. 진짜 이르잖아. 다 언더 강사 매버레스다. 다든잖아 강사 요 말레스. 다오나 강사 매버레스라나 타냐르니 던 게르고 요리 무슨 연구고 요리 근데 이민들은 다운을 강사서도 건드렸으나 대신 기부가 기부 컴준 되베칠 세네 기부함 강사서도 컴준 되버를 떼냈다고 그래요. 때 우문주고 나려야 아니 되니 도움 직진도 넘버 둥기 루줄 메메기 남제 매버는 직진 일은 늘 랑게 양아 떼낸다고 인스들 양아는 떼냈다고 그래요. 자상가 야나는 때는 따고 인도산에 그 때문에 라왕 그 들어지 야 말해. 봐. 차전도 차도 차전스럽도 차전스야디 요래 차전면은 차셔 용 말 봐. 레디 차셔 소스는 산은 차전 민도가. 차전면은 차 용 말 봐. 봐. 제법은 저 용 말이 저하면은 제법 용 말 봐. 이 상황으로 편수 때는 샤야 뭐도 민도가. 자, 지네 인도산에 가사 그러면 대레신의 기부함 기부 컴준 뇌베 7 기부 컴준 뇌버 때는 딱 말해 순산에 매버데 매버치 다두제는 이유의 매댕에 편주 때네 여댕에지 송윤도 양다마이 사대기 때네 두버 잠시 마도 몬 양다고 몬이 두버 요 말해 순사다 세브 쉬지래샤 난 지금 뒤쪽에 인다를 지금 사이는 저 동자 집에 그것도 딱와 지금 된대요. 아니 상무도 왔다.
당자 제베 그돌라 도스 엔 다가는 신 풍부 내시면 달라 때문에 달 때문에 그 디시고 풍되면 순거데 소소소자나 다지 가사 다지 저 컨신이 소 전에 풍부 내시면 달라 때문에 달 때문에 다지 저 풍되면 다지 저 컨신이 도 상당인데 직로리아 직리도 와 근데 그러고 고민도 전에 땡칼라 춘신 땡보신 인랑스 위에 나오로 녀나가 저와 멀리노 사다티 소화시리기도 와 이 전한 그 책이 역시 저래 규메라나 가사 규메라나 제네니 때문에 리고 살라라 제메 인수 탈라라 시도가 너무 좋도가 책이 아니 대화치 뭐 틀리리스 근데 지금 상담도 저베도베 심지 신우데 저제 나지 공부 мясо된 사 책도 다 주고 그래 이리 줄가 개면도 야말라도 주시 저 또때 안데 샴그 책이 쇼로가 되다 개체슈들이 가사다면 सुनते श्लोक नंबर 80 में इसमें कहा गया है कि जो हमारे अर्थात जो पृथ्वी है वो भी व्यक्ति नहीं है, ना तो व्यक्ति पानी है, ना तो आग है, ना वायु है, ना आकाश है, तो फिर ना तो चेतना है। आखिर ये सारी की सारी चीज़ें जो व्यक्ति नहीं है, पुद्गल नहीं है, तो फिर पुद्गल क्या है, ये कहाँ ढूंढने से मिलता है। तो ये चीज़ें जानने यहाँ पर बताएंगे कि ये हमारे 4 भौतिक तत्व कहे गए हैं, अर्थात 5 भौतिक तत्व हैं, ये भी पुरुष नहीं है, अर्थात पुद्गल नहीं है, तो सच्चा पुद्गल कहाँ है। तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि जो पुद्गल इन 5 चीज़ों के द्वारा बना हुआ एक जो हमारे जो स्कंद हैं उनके द्वारा आरोपित किए गए 5 स्कंदों के द्वारा एक नाम दिया गया है, उसको हम पुद्गल कहते हैं, अर्थात पुरुष कह सकते हैं। अन्यथा अन्य तरीके से अगर ढूंढा जाए तो वो मिल पाना मुश्किल है, कभी नहीं मिलता। कि जैसे कि जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो उस समय कहते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए, तो ऐसे हो गए, तो उस समय ये पुद्गल है, तो अगर उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है तो उसे होना चाहिए था, लेकिन हमारा शरीर या चित्त शरीर ही बुढ़ापे की तरफ जाता है, वही कमज़ोर होता है, ना कि जो पुरुष अर्थात पुद्गल। तो उस चीज़ को जिसे हम कहते हैं कि पुरुष की अस्तित्व होता है, आत्म का अस्तित्व होता है, वो कहाँ है। माध्यमिक कारिका में भी ऐसा जिक्र आया है कि इस चीज़ की जो पुद्गल उसका अस्तित्व कैसे कैसे होता है। तो अर्थात उन्होंने खुद कहा है कि हमारे जो 5 स्कंद हैं उन पर परस्पर निर्भर होकर के ही उसको एक संज्ञा दी गई, उसको एक नाम दिया गया है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हमारा कर्ता नहीं है तो उसको कर्म नहीं होगा, अगर कर्म नहीं होगा अगर कर्म नहीं होगा तो कर्ता नहीं होगा, अगर कर्म नहीं होगा तो कर्ता नहीं होगा, और कर्ता नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। तो ये इत्यादि प्रकार की जो सिद्धांत हैं वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होकर ही अस्तित्व में आते हैं। इसलिए इन चीज़ों को अगर देखा जाए, अगर हम उसका जांच पड़ताल करें, ढूंढने की कोशिश करें, इन 5 स्कंदों में अगर हम पुद्गल को अर्थात पुरुष को ढूंढने की कोशिश करें तो शायद ये ढूंढने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें ये जो पुद्गल एक निर्भर होकर ही अस्तित्व में आया हुआ है, इस वजह से उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में एक ध्यान लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर जो हम पुद्गल की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, या फिर कोई उसकी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि श्लोक में कहा गया कि हमारे जो मूलभूत 4 या 5 जो तत्व हैं उनमें तो ढूंढने से मिलता भी नहीं है, ना तो हमारी चेतना पुद्गल है और ना ही आकाश वायु इत्यादि। तो आखिर ये सच जो पुरुष है वो कहाँ है, इसके बारे में सोचना चाहिए, ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। 대리선에 지금 기부 컨트롤 대비치 양다 뭐이 치다와라 대신 칸네 레레양 뒤치 양다 이도 민세네 다 강사 가는 데는 다배 풍속의 최대에
가서 그게 때에 주버 잠마도 때문에 라운 거 주고 요 말이서 다들 강사가 되면 주의되면 이가로 송송아. 제. 다 되게 막 아니 다 진짜 인도산에 다 domde 안 돼서 되게 다 셜디 셜거 그저래. 가. 고추고고. 가. 99. 고주고고. 어다 되게 지게 아니 수중어부 명점실 난가야는 명점모스. 내디 책디지 준 상단되게 중미 속도 칼라식스. 두 종어 이게 따로 송야래. 사초 멜론 종어디디 편주 뜨루마도 종어들이신 누구자 매비지 주비야래. 다 디마 제니 중미 속도 칼라식스. 진짜 인도 수중어부 명점을 야 말이스. 수중어부 명점실스. 대달 뒤지기 수속이 뒤배 가다 수속이 참배 뒤지기 쉬어디디 명점 인도잖아. 토리 수소 토리 깍sam기 난가야 니아야 말이스. 난가야는 명점모스. 대달 뒤제든 뒤마치기 취업 강야 민기 딱sam심부터 매번 인도잖아. 뒤지 명점 니자메스. 명점기 취업디 당도자는 이바 인도잖아. 대달 때는 딱왜 명대야 명점레스. 배다 심이 속도가. 생각도 합득할래야 명대 샤점레스로 든 독지 똑바디 지금 섬섬에 되는 진짜네 그 도와서 왕으로 그러 예배서지. 저도 이제 명대 샤점레스. 독지 그 똑바디 왕으로 도와서 예배서지. 명대에 도와서 죽을 예배서지. 다 뒤지 명점 얘기하면서도 다 명대 샤서 쳐내면 누가 수준 뭐 가서 중미수도 갈라시 수중어부 명점실 나가야 하는 명점모 뒤지 명점 얘기하면 다 제인데 아무 수바와도 사와도 뭐 수바와셔도 항상 롤 전다지 롤 지내고도 또 어떤 좋스다 이 쇼데 인다가다 가서 뒤지 컴로 다음에도 림부지 창원에 뭐버 통하다 내벌레고 템버데 리우 당보 스타지 좀 좋으세요. तो इस अंत में 99 श्लोक नंबर 99 ये जो इसका एक तरह का सार के रूप में है तो इसमें भी कहा गया कि जितने भी धर्म हैं वो उनके केवल नाम मात्र के रूप में दिया गया है, केवल नाम मात्र के रूप में ही हैं। तो आखिरी इतने के सारे जो अणु हैं, यहाँ तक जो 4 या 5 भौतिक अणु भी हैं, वो भी किस प्रकार से अस्तित्व में आए हैं, वो भी निर्भर होकर के, वो भी एक दूसरे पर निर्भर होकर के ही अस्तित्व में आए हुए हैं। तो इनके बारे में इस सार के रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सभी प्रकार के धर्म हैं उनका सिर्फ नाम रूप में आरोपित हैं, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता अपनी ओर से नहीं है। चाहे वो संस्कृत धर्म हो अर्थात असंस्कृत धर्म हो, कहने का मतलब चाहे वो परिवर्तनशील धर्म हो या अर्थात नित्य धर्म हो, इस सारे के सारे जो धर्म हैं वो अपने एक नाम मात्र के रूप में आरोपित हैं, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारी रत्नावली का अध्याय पहला समाप्त होता है। Oh yeah. So this subject not easy, but very important. I myself, I think my age, I think about 13, 14, already developed keen interest about this. But then, at that time, since then, I made sort of continuously effort to understand that. Then my age, around 30, then begin to feel something. That immense help to understand nirvana, salvation. More understanding, more awareness, the very nature or very possibility to achieve that moksha or nirvana, then the enthusiasm to achieve nirvana. So that usually called renunciation, right? Renunciation. That also immense help. Look, all sentient beings, mainly you see in samsara, you see people or sentient beings. Everyone want happy life.
everyone do not want suffering. But the ultimate source of suffering is that ignorance, distorted ignorance. That we believe, that's very true. So the method to eliminate that is the only the wisdom which understands the emptiness or shunyata. The altruism, wonderful, but not direct sort of antidote, that ignorance. So therefore, this concept is very, very important. Of course, for Buddhist, non-Buddhist, not much relevant. One time, one of my very close sort of friend, one Catholic monk, wonderful, one American. See, we often used to discuss about practice of altruism, practice of forgiveness, these things, and also single-pointed sort of meditation. This is common. So one day, he asked me about shunyata. Then I told him, don't ask that, that's not your business. This is Buddhist business. Similarly, last year in South India, Bangalore, one great sort of sadhu, spiritual leader, he really fully committed about social work, and he provide food, I think lunch, millions, I think several thousand students. So we met, and then we simply chat or talk, casual talk. And then I mentioned to him, Hinduism and Buddhism like twin brothers, sisters. The Shila, Samatha, then Paranja, common. Then I told him the difference is Atma and Anatma. So that's our private business. So these three common things we both practice, so more or less same. Then concept of Atma and Anatma, that's a demarcation, Buddhism and non-Buddhism. But that's a private business. You believe Atma, so it get a benefit. So you believe that better. I believe Anatma, it benefit to me, so I believe that. So that's a private business. So those people who believe God or Creator, better to believe that, maintain that belief, or Allah, like that. And those people, you see, who believe Atma, independent self or soul, feel more comfortable, and then believe that better. I never say one religion is something best religion. I never say that. I am Buddhist. Sometimes I describe I'm quite staunch Buddhist. Because I learn, you see, these Nalanda masters of text. So all the critical view about God or Creator and also the independent self, a lot of argument. I study these things. So I can say I am quite staunch Buddhist. But I never say Buddhism is best religion. No. According individual's mental disposition, then we can say, oh, for your case, this religion is best, like medicine. According particular illness, then we can say, oh, for your illness, for your case, this medicine is best. We cannot say, pick up one medicine, this is best medicine. No. So similarly, we cannot say spirituality or religion is food or medicine of our mind. So according different mental disposition, we have to judge, oh, for your case, this philosophical view is more suitable.
for your case, this philosophical view is more suitable, like that. So we cannot say one religion is best. I am Buddhist. I never state Buddhism is best. As far as philosophical field is concerned, Buddhist philosophy is the most sophisticated philosophy. That's quite clear, isn't it? So we need this 300 volumes. Really, you see, they need a lot of effort to study, even read, or take years. Then, not only you see learning, but contemplate and sort of make relation with our emotion. Then through that way, you get deeper understanding through your experience. So that we should call the knowledge or understand hearing level. That's just hearing. Then contemplate, analyze. Then you get second level of understanding. That's very firm because you thoroughly analyze and raise a lot of questions, a lot of sort of critics there, or questions, then analyze. So that, understand through that, so after that is the real conviction come. That level alone not affect our emotion. Then familiarize, daily basis, think, meditate. Then you get some deeper, real understanding out of experience. Now that really affect our emotion. Clear? Thank you. Now, good night. Time for sleep. You, I think most of you, again, you see dinner and some wine. I don't think anyone is who thinking go to nightclub. I don't think. No, that's good. One time in Berlin, the room of the hotel, they organize, arranges my stay. From my window, directly the other side, one sort of, I said, a nightclub sort of, was the place. So I saw from outside, from my room, different color, blue, yellow, like that. And then also I can hear zhang sheng, like that. So about my sort of time for betting, about 7, say, they start, you see, they are sort of also the busy life. Then midnight, I wake up, watch, again go zheng sheng. Then about 4, I already got up, some meditation. I hear zheng sheng. And I look, still the light blue, yellow, go like that. So they quite sort of courageous, they sacrifice their nice sleep. Thank you, good night.